Hello friends, welcome to Let's Crack UPSC CSE. This is me, Dr. Sidharth Arora, and friends, we are continuing with our battle level MCQ series for UPSC CSE prelims. अब हुआ क्या है कि मैंने फ्रॉम पार्ट 1 टू पार्ट 10 दैट इज 100 क्वेश्चंस पूरे के पूरे कवर कर दिए. नाउ ऐसे थोड़ा ना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा. ओके, तुमने क्वेश्चंस कर लिए, तुमने बड़ा एंजॉय कर लिया, जो बहुत अच्छा हो जी, हमने ABCD ट्राई कर लिया, सर ने समझा भी दिया, बहुत हो गया. नो माय फ्रेंड्स, हैव यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस? Have you really understood these MCQs? Are you absolutely comfortable with answering these MCQs or not? Is a $1 million question. तो जब तक ये नहीं होता, right, we have not yet finished of our job, तो वो मैं होने नहीं दूंगा. So हमने rapid fire revision process लाया है. मैंने 1 to 50 questions का एक rapid fire revision कर लिया था in the last video. अब rapid fire revision part 2 of those 51 to 100 क्वेश्चंस जो कि हमने ऑलरेडी कर लिए, जिसके बारे में मैं एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ, जिसके बारे में तुम्हें आंसर्स बता चुका हूँ, उसको अब करने का टाइम आया. सो द पॉइंट हियर इज कि अब ये बात पता चल जाएगी कि हैव यू रियली अंडरस्टूड दिस पार्ट, हैव यू रियली अंडरस्टूड कि अप्रोच कैसे करना है, एंड आर यू श्योर ऑफ दिस आंसरिंग. तो भाई मेरा काम है तुमको हर पॉसिबल तरीके से मदद करना टू क्रैक दिस एग्जाम. सो इसी दौरान नाउ रैपिड फायर रिविजन पार्ट 2. तो हम स्टार्ट करेंगे 51st क्वेश्चन से, और प्लीज़ मेक श्योर कि अब गलत ना हो. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग पढ़ें, रिवाइज करें एंड देन टेस्ट करें, एंड देन अगेन एंड अगेन पढ़ें, रिवाइज करें, टेस्ट करें. सो दिस एंटायर प्रोसेस मस्ट कंटिन्यू. सो मेक श्योर दैट यू आइदर आंसर इन योर नोटबुक और यू आंसर in the comment section. I'll be very happy either ways. Make sure that you answer और कोशिश करो तुम्हारे फुल मार्क्स आए. सो दिस इज मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा. अनअकैडमी की दुनिया में मुझे SIDLIVE SIDLIVE मेरा रेफरल कोड है, इस नाम से जाना जाता है. सो whenever you take the subscription of Unacademy, तो मेक श्योर दैट यू यूज द कोड SIDLIVE. तो अगर तुम अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करोगे और उस पर मेरे प्रोफाइल पर जाओगे तो तुम्हें अलग अलग टाइप के कोर्सेज दिखाई देंगे. एक तरह का कोर्स विल बी कॉल्ड एज कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटी कोर्स, जिसमें A to Z बिल्कुल बेयर मिनिमम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल ऑफ पॉलिटी तक मैं पढ़ाता चले जाऊंगा. ऑल्सो देयर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नेंस कोर्स. अब इसके नाम थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट द एसेंस हियर इज इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स. इसमें भी चाणक्य के बेसिस ऑफ गवर्नेंस से लेकर आज तक की वेलफेयर स्कीम, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग विल बी डेल्ट विद. एक थर्ड विच इज़ अ वेरी पॉपुलर कोर्स, जो कि एक्चुअली मैं तुम्हें बता देता हूँ कि एक ब्रांड न्यू कंप्लीट IR का कोर्स स्टार्ट होने वाला है वेरी सून इन द नेक्स्ट वीक. सो इंटरनेशनल रिलेशन में भी बेसिक सिंपल मेथड्स ऑफ डिप्लोमेसी से लेकर ऑल द वे फ्रॉम दिस टू इंडिया चाइना डिस्प्यूट, इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट, नॉन अलाइन मूवमेंट, एवरीथिंग आई हैव डेल्ट विद इन दिस पार्ट. ऑल्सो मैं ऑप्शनल स्टूडेंट्स जो कि PSI और ऑप्शनल जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए लेकर आया हूँ द कॉम्प्रिहेंसिव PSI और ऑप्शनल. और एक बार इन कोर्सेज को अटेंड करके देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन होती क्या है. और इन सब में मैंने इंटेंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और आंसर राइटिंग को कंबाइन करके रखा हुआ है. ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज द कोड SIDLIVE SIDLIVE. चाहे तुम प्लस क्लासेस लो, चाहे आइकॉनिक क्लासेस लो, और जैसे ही तुमने SIDLIVE SIDLIVE रेफरल कोड की जगह यूज कर दिया, वहां पर तुम्हें जो भी प्राइस होगा, जो भी कॉस्ट होगा उस कोर्स का, उतना टाइम पर यू विल गेट एन इमीडिएट 10% डिस्काउंट. तो यूज द कोड SIDLIVE SIDLIVE. एंड चाहे तुम प्लस क्लास लो, चाहे आइकॉनिक क्लास लो, और मैं तो सजेस्ट करूंगा यू शुड टेक अ कॉम्बिनेशन कोर्स. कॉम्बिनेशन कोर्स में GS एज वेल एज ऑप्शनल का कॉम्बिनेशन होता है. तो चाहे तुम 2 ईयर कोर्स लो, चाहे 3 ईयर कोर्स लो, मेक श्योर दैट यू यूज द कोड SIDLIVE. एंड तुम्हें एक बार देखो कितना परसेंटेज बचता है. 30% का डिस्काउंट हो जाता है अगर तुम ऑप्शनल का कॉम्बिनेशन कोर्स लेते हो, और उसके बाद फिर तुम SIDLIVE. कैन यू बिलीव द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू कैन सेव. सो लास्ट माइल प्रोग्राम भी अनअकैडमी आपके लिए लेकर आई. इससे तुम्हें ये बात पता चलेगी कि अनअकैडमी लास्ट डे तक तुम्हारा साथ देगा, इवन टिल योर इंटरव्यू. 28 अप्रैल यानी कि आज तक 28 अप्रैल तक, अगर आज तुम 28 अप्रैल को ये वीडियो देख रहे हो, तो अगर तुमने 28 अप्रैल तक आपने अगर अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन ली, तो तुम्हें एक नहीं 2 एडेड एडवांटेज मिलेंगे.
एक एडवांटेज विल बी कि तुम्हें 10,000 रुपये 10,000 रुपीज़ तक की बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी. दीज आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बुक्स मेड बाय द UPSC एक्सपर्ट्स एट Unacademy. तो उसमें तुम्हें करंट अफेयर्स मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा. ओके, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दिस पार्ट, और ये तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा एट योर होम. ऑल्सो तुम्हें एक्सटेंशन मिल जाएगा. 1 ईयर का कोर्स तुम्हें 1 ईयर का ना होके विल बी एक्सटेंडेड ऑल द वे टिल द नेक्स्ट प्रीलिम्स, और 2 ईयर का कोर्स विल बी एक्सटेंडेड ऑल द वे टिल द नेक्स्ट प्रीलिम्स, दैट इज 2 ईयर्स 2023 तक का. सो 1 ईयर का कोर्स 2022 के प्रीलिम्स तक जाएगा, 2 ईयर का कोर्स 23 के प्रीलिम्स तक जाएगा. व्हाट मोर कैन यू वांट? ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज द कोड सेट लाइव. सिर्फ एक ही कोड याद रखना है तुम्हें, सेट लाइव, SIDLIVE, और तुम्हें पता चल जाएगा कि 24 कैरेट प्रिपरेशन होती क्या है. सो डोंट वेस्ट योर टाइम माय फ्रेंड्स. यू आर अ वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट्स, टेक अ वाइज डिसीजन बट टेक इट नाउ. समय निकल जाने के बाद पछताने का क्या फायदा. मेक श्योर दैट यू गिव योरसेल्फ अ रियलिस्टिक चांस ऑफ पासिंग दिस एग्जाम, whether you want the extended offer of, as I told you, 1 year का plan till prelims 2022, या 2 year का plan till prelims 2023, 28 अप्रैल भूलना मत, या you want free test series, या फिर you want batch courses. This is how you prepare for yourself. So make sure that you take advantage of this part. हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51. अब ये तुमने ऑलरेडी किए हुए, ओके, सो यू हैव टू गो फास्ट ऑन दिस पार्ट, और मैं ऑलरेडी ये आंसर्स डिस्कस कर चुका हूँ. अगर नहीं हुआ तो गो बैक टू द वीडियोस एंड वॉच दिस एंड यू विल आल्सो नो द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट. लेकिन पिछली बार मैंने टाइम दिया था, पिछली बार मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था, तो वो अब नहीं मिलने वाला. मतलब अब फास्ट जाएगा. एवरीथिंग विल बी फास्ट. यू विल गेट एग्जैक्टली 60 सेकेंड, और मेरी तरफ से कोई मदद नहीं मिलेगी. सो वी विल जस्ट गो वेरी फास्ट विद दिस पार्ट. यहाँ पर रिविजन है. अब तुम्हें ऐसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की तरह ये आंसर आने चाहिए, और अगर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है तुम्हारे रिवीजन में कुछ कमी है, और फिर तुम्हें वो करना पड़ेगा. रिमेंबर, यू आर अपियरिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन द वर्ल्ड, और इसका फाइनल एम इज ह्यूज. तो ये करियर नहीं है माय फ्रेंड्स, ये तुम्हारा जिंदगी, तुम्हारा DNA बदल देगा. मेक श्योर दैट यू गो फॉर इट. क्वेश्चन नंबर 51 कमिंग योर वे. Who or which of the following is the custodian of the Constitution of India? A. The President of India. B. The Prime Minister of India. C. The Lok Sabha Secretariat. D. The Supreme Court of India. Your time starts now. T minus 1 minute. Exact 60 seconds. T minus 50 seconds. T Who or minus which 40 of the seconds. following? ये तुम्हें थोड़ा बहुत, अगर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए होंगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि ये प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन है. 30 seconds. T minus 20 seconds. 20 seconds. अब तुम्हें पता चला कितनी जल्दी टाइम जाता है. So until unless you are absolutely sure 10 of your preparation, मुश्किल हो जाता है बेटा लास्ट मोमेंट पे सोचना. 6 5 4 3 2 1. Okay, and the answer of course is the Supreme Court of India. ये asked क्वेश्चन है, UPSC CSE 2015 में क्वेश्चन आज था. ओके, और मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है. अगर एक्सप्लेनेशन देखना है तो गो बैक टू द वीडियो सीरीज. इसी ये बैटल लेवल सीरीज देखो जहां पर क्वेश्चन नंबर 51 to 60 दिया हुआ है, एंड यू विल बी एबल टू सी द एक्सप्लेनेशन फॉर दैट पार्ट. क्वेश्चन नंबर 52 कमिंग योर वे विदाउट एनी ब्रीदर. क्वेश्चन नंबर 52, I quote, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, unquote, is a provision made in the A. Preamble of the Constitution, B. Directive principles of the state policy, C. Fundamental rights, D. Fundamental duties. Time starts T minus now. 1 minute. इसमें जो ट्विस्ट है ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. 40 seconds, my friends. Concentrate. ये अब गलत नहीं होने चाहिए. एक्सप्लेनेशन देखनी है, गो एंड चेक इट आउट इन द वीडियो सीरीज. अब ये ऐसे होना चाहिए कि 10 सेकंड में आंसर आ जाए. T
minus 20 seconds. 20 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. परफेक्ट आंसर ऑफ कोर्स प्लीज याद रखना, यहाँ पे तुमने से सॉवरेनिटी यूनिटी इंटेग्रिटी देखकर प्रीएम्बल मत मार्क कर देना. इट इज टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी. आर्टिकल 51 कैपिटल ए सब क्लॉज सी है, यानी कि द थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी है. अगर गलत हुआ है तो भाई तुम मेजर ट्रैप में फंस रहे हो. मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो एंड यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. नो टाइम गिविंग for any kind of breathers whatsoever. Let's go to question number 53 now. What is the date on which Vijay Diwas to mark the victory of India in Indo-Pakistan War of 1971 observed? What is the date? Alright, April 24, December 16, July 26 या August 5. April 24, December 16, July 26 या August 5. Your T time minus starts 1 now. minute. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. 30 seconds. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. परफेक्ट आंसर. प्लीज रिमेंबर यहाँ पर पूछा गया था विजय दिवस ऑफ 1971 वाला. ओके, सो दैट वाज December 16, 4:30 PM when Lieutenant General Jagjit Singh Arora made Lieutenant General A.K. Niazi of the Pakistani Army to surrender unconditionally with 93,000 prisoners of war. तो ये था 1971 वाला. Don't mix it up with Kargil Vijay Diwas which is on 26 July. Make sure that you know these dates. ये dates पता होनी बड़ी ज़रूरी होती है इंटरनेशनल रिलेशन में, और also as a concerned Indian citizen तुम्हें सब कुछ मालूम होना चाहिए. आई होप तुम लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है. अब 3 क्वेश्चन हो गए हैं. प्लीज मार्क योरसेल्फ +1 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर. बाकी तुम लोगों को एग्जैक्टली पता चले वेयर डू यू स्टैंड. ओके, एंड एक दिन तक कम से कम एम करो जब व्हेन यू हैव 100 और 100. दैट इज द एम. लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 54. Which of the following DPSP directs the state to ensure a social order based on justice, social, economic and political? Article 36, Article 37, Article 38, Article 39, capital A. Your time starts now. T minus 1 minute. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, मैं बिल्कुल मदद नहीं करूंगा, बट आई होप तुम्हें मालूम है कि जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेलफेयर स्टेट. द वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया आर्टिकल 38 में, एंड आर्टिकल 38 सेज वेरी वेरी कैटेगोरिकली अबाउट इट that the state shall strive to become a welfare state in which justice, social, economic, political shall inform every sphere of the national life. तो ये है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल. ये DPSP प्लीज मेक श्योर दैट आप मेमोराइज कर लो, बिकॉज अगर आपने ये नहीं किया तो यू विल बी इन ट्रैप वेरी सून. तो बहुत सारे लोग से वैसे करते हैं कि ना छोटे मोटे से आर्टिकल्स याद कर लेते हैं, और कुछ बुक्स में भी दिया हुआ है. ओके, विद इन 2-3 पेजेस पूरा DPSP खत्म हो गया. बट आई थिंक DPSP इज अमंग्स द मोस्ट क्रूशियल पार्ट and some very dangerous questions are being asked. In fact, last UPSC CSE
मे बी इफ यू रिमेंबर आर्टिकल 51 पे क्वेश्चन आया हुआ है, सो मेक श्योर दैट यू मेमोराइज दिस इन एंड आउट। एंड जैसे मैंने प्लस क्लासेस में किया, अगर उतनी डिटेल में कर लोगे फिर तो क्या कहने। क्वेश्चन नंबर 55, विच आर्टिकल डील्स विद पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अब ये क्वेश्चन फिर से वहीं पर ही गड़बड़ आता है, बिकॉज देयर वाज एन एरर ओवर दिस पार्ट। तो मैं इसको पहले से हटा देता हूँ, फिर तुम लोग को टेंशन लगेगी। Which of the article deals with privileges enjoyed by members of the state legislature? Article 105, Article 194, Article 102, Article 74. Your time starts now. T minus 1 minute. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. 30 seconds. तुम नोटिस करो यार कितनी जल्दी 1 मिनट खत्म हो जाता है। Before you know it, before you read the choices, you are in T trouble. minus 20 seconds. इसीलिए बोलता हूँ रॉक सॉलिड कंक्रीट प्रिपरेशन करो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. आंसर ऑफ कोर्स इज आर्टिकल 194। और अगर यही पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, अगर ये ऊपर वाला लाइन हटा दूँ तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होता, और अगर ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होता तो ऑब्वियसली आंसर वुड हैव बीकम आर्टिकल 105। बट इसे एक और बात याद रखना कि मेक श्योर दैट यू रीड द प्रिविलेजेस ऑल्सो। इस पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में फ़र्क क्या होता है, और प्रिविलेजेस का विद रिगार्ड्स टू कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस क्या फ़र्क होता है। सो सम वेरी गुड क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ऑन दिस पार्ट, and the contempt of court act को comparison with the indefinite or rather the uncontrolled or uncodified parliamentary privileges enjoyed by the legislature या फिर the members of the state legislature को comparison। तो ये question mains में भी आ सकता है। Make sure that you know this completely. Let's go to question number 56. अपने आप को marks दो, +1 -1 0। Citizenship Act 1955 does not provide for which amongst the following does not पूछा गया है। A. NRI status. B. Overseas citizen of India. C. Termination of citizenship. D. Deprivation of citizenship. Your time starts now. याद रखना does not पूछा गया। T minus 1 minute. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. 30 seconds। अब टाइम कितना फास्ट जाता है यार, तुम्हें सोचो, मौका ही नहीं मिलता। T minus 20 seconds. 20 seconds ago। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. टाइम अप। और सिटीजनशिप एक्ट जब से 2019 के अमेंडमेंट हुई है, ये टॉपिक जो कि एक्चुअली डोरमेंट था, मेरे को पूछता नहीं था, या पूछते भी थे तो बहुत कम पूछते थे। सडनली इज अमंग्स द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द पिरामिड जहाँ पे ये क्वेश्चन पूछने की कॉन्सेप्ट है। मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि एनआरआई स्टेटस को सिटीजनशिप एक्ट में क्यों नहीं इन्वॉल्व किया जाता है। तो इफ यू वांट टू सी द एक्सप्लेनेशन प्लीज गो टू द वीडियो सीरीज। इसी का वीडियो सीरीज देखो, बैटल लेवल सीरीज, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट इट इज डीलिंग विद ओवरसीज सिटीजन, termination, deprivation, renunciation, providing but not with NRI status. Why and why not? Make sure that you watch that video and you will be able to understand. मैंने काफ़ी कंसिडरेबल डिटेल में समझा दिया, और मेरी प्लस क्लासेस में तो मैंने इसके ऊपर करीब करीब रिसर्च टॉपिक PhD टॉपिक करा दिया। सो जो प्लस स्टूडेंट्स हैं वो लोग तो हार नहीं सकते, तुम लोग का भी फायदा हो सकता है। इवन इफ यू आर नॉट अटेंडेड माई प्लस क्लासेस, that you can actually understand the explanation from the video series. Let's go to the next one. Consider the following statements. India adopted the federal structure from Canada. 2. Federalism is not considered, not understanding, not considered an essential feature of the basic structure of the constitution. Which of these statements is or are true? 1 only, 2 only, both 1 and 2, none of the above. Let's go. Your time starts now. T minus 1 minute.
T minus 50 seconds. 50 seconds. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. Ten, 9, Last 10 seconds. Focus. 6, Which of these are true? 5, 4, 3, 2, 1. Alright, and true पूछते ही you should be knowing that only the first one is correct because we adopted the quasi-judicial quasi-federal structure from Canada. Federalism is certainly a part of the essential feature or the basic feature of the constitution. Explanation देखनी है तो please watch the videos, you will be able to understand this. Having said so, फेडरलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको पॉलिटी में भी पूछा जाता है, गवर्नेंस में भी पूछा जाता है. सो मेक श्योर ऑन इनफैक्ट पॉलिटिकल साइंस में भी पूछा जाता है. जिन लोगों ने PSIR लिया हुआ है उनके लिए भी ये बहुत काम का है. मेक श्योर दैट यू नो दिस कंप्लीटली एंड लुक एट क्वेश्चन नंबर 58. ओह, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन. Which of the following offices has been kept outside the jurisdiction of the Lokpal? A. Union Cabinet Ministers. B. Chief Justice of the Supreme Court. C. Members of the Parliament. D. None of the above. Your time starts now. T minus 1 minute. 1 minute. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. 30 seconds, my friends. Quickly eliminate करो. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. टाइम अप. आई थिंक तुम्हें ये लोकपाल वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ना जरूरी भी है. देयर आर सर्टेन क्रिटिसिज्म विद रिलेशनशिप टू द लोकपाल कि किन ऑफिसेस को या किन रोल्स में प्राइम मिनिस्टर को भी हैज बीन केप्ट आउटसाइड द पॉइंट ऑफ द लोकपाल. कहीं कहीं पर इवन प्राइम मिनिस्टर इज नॉट कवर्ड. ओके, और द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट कवर्ड. तो लोकपाल एक ऐसा टॉपिक है. तो मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया था तो कि आई टोल्ड यू दैट इट इज़ बेटर दैट यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद लोकपाल. दिस इज वन ऑफ द मेथड्स. ओके, तो लोकपाल से स्टार्ट करो. तो लोकपाल से कनेक्ट करो, CBI को कनेक्ट करो, CVC से CVC को कनेक्ट करो विद रिलेशनशिप टू एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. फिर थोड़ा बहुत जुडिशरी आ जाएगा, विनीत नारायण केस आ जाएगा, ऑल दैट स्टफ. फिर CBI से रिलेटेड सारे डिस्कशंस आ जाएंगे एंड इट विल गो ऑन एंड वहाँ से कनेक्शन मिलता जाता है. जैसे जुडिशरी आएगा फिर जुडिशियल एक्टिविज्म आ जाएगा एंड सो ऑन, सो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस एंड सो ऑन सो फॉर्थ. सो देयर इज़ अ वेरी नाइस वे. एक बार जाके यूट्यूब पे वो वीडियो देखो एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि फर्स्ट लोकपाल बने, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष बने. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें बेसिक आए. अब मैंने ये बात वैसे पहले भी समझाई हुई है बट मेरा काम है एवरी टाइम आई मीट यू आई रिमाइंड यू दैट हाउ डू यू एक्चुअली डू अ प्रिपरेशन. तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि प्रिपरेशन करनी कैसे. तो रॉक सॉलिड प्रिपरेशन होती है ना तभी इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है. बाकी सब सिर्फ टाइम पास है. यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज दिस एग्जाम विदाउट दैट. सो आई एम अगेन वेलकमिंग यू टू जॉइन मी. नीचे दिख रहा है डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा. माई कोड सेट लाइव यूज़ करो एंड मेक श्योर दैट यू गिव योर सेल्फ अ रियलिस्टिक चांस. घर बैठे बैठे सपने देखना और लोगों को ऐसा टाइम पास में करते रहना से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है. गिव योर सेल्फ अ सॉलिड चांस ऑफ पासिंग दिस एग्जाम. Which amongst the following statements with regards to Quad is or true? अब ये आ गया ना थोड़ा बहुत international relation. A. It comprises of India, Japan, USA, and New Zealand. B. It is a formal strategic agreement between the member states to deal with China's expansionist policy. C. Both A and B. D. None of the above. Your time starts now. T minus 1 minute. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. 40 seconds.
minus 30 seconds. जितने भी आईआर के रिलेशन में स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जो रीजनल कोऑपरेशन हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बन रही है, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आईआर में आता ही आता है। और ये इतने फेवरेट क्वेश्चंस हो चुके हैं दैट अमंग्स द टॉप पार्ट ऑफ द एग्जामिनर्स फोकस हो गया। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ऑलराइट, सो आंसर ऑफ कोर्स इसके दोनों ही गड़बड़ है। अब इसमें गड़बड़ कैसे हो गया, तुम लोग भी बोलोगे यार सर ये गड़बड़ कैसे हुआ। सो इसके एक्सप्लेनेशन वैसे मैंने दिया हुआ है, बट थोड़ा बहुत आइडिया बिकॉज अभी है तो इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया है, और ये फॉर्मल स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट नहीं है, इट इज़ एन अंडरस्टैंडिंग। तो चाइनाज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी देखते हैं, आंसर मत देने लग जाना, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक बार वो वीडियो ज़रूर देखना, मैंने उसमें काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है और तुम्हें पता चल जाएगा कि इसमें आंसर करेक्ट क्या है। तो क्वाड के बारे में सब कुछ पढ़ लेना, आसियान, एससीओ, वन बेल्ट वन रोड। एक बार मेरे जो आईआर को क्लासेस है ना, एक बार देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कितना डिटेल में मैंने पढ़ाया है। इनफैक्ट मुझे ऐसी ऐसी जगह से कमेंट्स आए हैं जो लोग शायद यू नो दे आर द पेरेंट्स ऑफ आवर स्टूडेंट्स, और उन्होंने कमेंट किया है, वो आर वेरी वेरी वेल नोन एक्सपर्ट्स इन फॉरेन पॉलिसी, और उन्होंने बोला कि इतना सिंप्लीफिकेशन में और इतना डेप्थ में शायद ही कभी किसी ने किसी को पढ़ाया होगा। मेक श्योर कि वो वीडियोस देखो एंड टेक एडवांटेज ऑफ दिस पार्ट। सो प्लस क्लासेस में ज्वाइन करो, अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करो, बैठे बैठे तो भैया निकल जाने वाले हैं एंड टाइम। विच लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डेल्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ राइट टू डाई। जो मेरे प्लस वाले स्टूडेंट्स हैं चिल्ला के आंसर दे रहे होंगे, ओह धीरे भैया धीरे। ऑलराइट, ए ओल्गा टेलिस केस, बी अरुणा शानबाग केस, सी क्योडो होलोवान केस, डी इंदिरा सानी केस। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। T minus 1 minute. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. 40 seconds. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. परफेक्ट। अब ये लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी पढ़ लेना, ओके, बिकॉज पहले ना ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं थे, ओके, लेकिन मैं फिर भी पढ़ाता था बिकॉज आई न्यू दैट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन ऑन द कोर्ट इज द फाइनल, ऑन द पॉइंट ऑफ लॉ इज द फाइनल थिंग, इट इज़ द फाइनल कस्टोडियन एंड द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो तब लोग बोलते थे कि सर इतना डिटेल में क्यों जाते, ये मिस कर जाते हैं। और देन यूपीएससी ने वो करना किया, जो जस्टिफाई करना स्टार्ट किया कि डेप्थ में पढ़ना आना चाहिए। द फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स एंड द फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ इंडिया को एक्चुअली मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली लॉ क्या है। सो ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, 4-5 साल से लगातार, ओके, सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर तुम्हें थोड़ी देर पहले याद है, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस, सीधा सीधा हादिया केस में से कॉन्सेप्ट उठा लिया था। सो इस वाले केस में ऑफकोर्स आंसर अरुणा शानबाग केस, और ये सारी की सारी लैंडमार्क जजमेंट मैंने प्लस क्लास में पढ़ाई हुई है। इनफैक्ट इन वीडियो में ही एक्सप्लेन किया हुआ, तो मेक श्योर दैट यू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। अब तुम्हें मालूम पड़ा कि किस तरह से प्रिपरेशन करना है, पॉलिटी गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन की एक्चुअली एक्सपेक्टेशन है क्या। इफ़ यू वांट टू सी 24 कैरेट प्रिपरेशन, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू take a reasonable and a wise decision now. Join my courses by using the special code SIDLIVE, SIDLIVE. चाहे 1 साल का कोर्स हो, चाहे 2 साल का हो या 3 साल का कोर्स हो, make sure that you join this and get an immediate 10% discount. And let us continue with question number 61 onwards. So let's go to the question number 61, but उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि अगर आपने 28 अप्रैल से पहले, 28 अप्रैल, शायद आप वीडियो भी 28 अप्रैल को देख रहे होंगे, अगर आप 28 अप्रैल से पहले आपने अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो माय फ्रेंड्स तुम्हें एक नहीं 2 एडवांटेज होंगे। वन एडवांटेज विल बी दैट आपको 10,000 रुपीज़ की बुक्स वर्थ 10,000 रुपीज़ की बुक्स ऑफ the previous year questions, the updated study material, current affairs made by the best of the UPSC educators at Unacademy, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और दूसरा कि इसमें तुम्हें एक्सटेंडेड प्लान मिलेगा,
1 ईयर प्लान जो कि मिलता है, जो आमतौर पर 1 ईयर के लिए ख़त्म हो जाएगा एग्जैक्टली बाय द कैलेंडर, इस केस में एक्सटेंड हो जाएगा टिल सच डेट दैट प्रीलिम्स 2022 हो। और ऑल्सो द 2 ईयर प्लान अगर लोगे तो इट विल नॉट फिनिश एट 2 years, इट विल फिनिश ओनली एट दैट टाइम व्हेन प्रीलिम्स 23 खत्म होगा। सो इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अगर तुम चांस ले ही रहे हो, अगर तुम अपनी एग्जाम के लिए रियलिस्टिकली 1% सीरियस हो, मेक श्योर दैट यू टेक दिस कोर्स एंड यूज द कोड सेट लाइव। तुम्हें सिर्फ एक कोड याद रखना है, सेट लाइव। क्वेश्चन नंबर 61 coming your way. Consider the following statements with reference to the Election Commission of India. 1. The Election Commission of India is a constitutional body. 2. Election Commission of India has quasi-judicial powers. 3. The Chief Election Commissioner serves at the pleasure of the President. Which of the statements given above is or are correct? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3, या फिर none of the above. Your time starts now. T minus 1 minute. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. 40 seconds. इस सब को हम ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में कर चुके हैं इन द सीरीज ऑफ द सेम सीरीज, बट अब तुम्हारे पास मौका है टू क्विकली रिवाइज एंड नो कि तुम्हें एक्चुअली कितना आता है और कितना नहीं आता है। T minus 20 seconds. Twenty seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. ऑल राइट, मैं फिर बोल रहा हूँ, इलेक्शन एक पेरिनियल सब्जेक्ट है और ये तुम्हें आना ही चाहिए। प्लीज रिमेंबर द चीफ इलेक्शन कमीशन डज नॉट सर्व एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इन फैक्ट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ही केप्ट एज ऑटोनॉमस। जब तक पार्लियामेंट का रेफरल नहीं होता तब तक इट इज़ नॉट टू बी डन। रेस्ट ऑफ इट इज टू बी अंडरस्टूड अंडर आर्टिकल 324 to 329। द इलेक्टोरल प्रोसेस डिस्क्राइब किया गया है। आर्टिकल 324 says the superintendent's direction and control over the elections of the parliament, or the state legislature, the president, vice president shall be with the election commission of India. Question number 62 coming your way. With regards to the following offices, select the correct combination of the office and the body to which the office must resign. तो एक साइड पर ऑफिस लिखा हुआ, दूसरी साइड पे लिखा है टू द बॉडी, जहाँ पर वो रेजिग्नेशन करना चाहिए। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब वो मैच करो जहाँ पर द फर्स्ट वाला यानी कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा डज ही रिजाइन टू द डेप्यूटी स्पीकर और नॉट। 1 and 2 only, 1, 2 and 4 only, 1, 3 and 4, sorry 2, 3 and 4 and 1, 3 and 4 only. Please select the correct T combination. minus 1 minute. T ध्यान से minus 50 चेक करो कि seconds. 1 वाला कॉम्बिनेशन जमता है कि नहीं। स्पीकर ऑफ द लोकसभा डज ही रिजाइन टू द डेप्यूटी स्पीकर और नॉट। T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. 30 seconds. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. परफेक्ट। अब तुमको सिर्फ ये चेक करना था कि कौन किसको रिजाइन करता है। सो ये भी एक सिंपल सा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिजाइन टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही रिजाइंस टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब बहुत सारा इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी वीडियो में किया हुआ है, तो गो टू द वीडियो जो बैटल लेवल यूपीएससी सीरीज हुआ है और उस वीडियो में जाकर देखो कि मैंने इसको कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है। और यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड, इनफैक्ट जो मैंने प्लस क्लास में पढ़ाया हुआ है, इनफैक्ट मैं पढ़ाते पढ़ाते ही बहुत सारी चीज़ें ये सब बता देता हूँ ताकि तुमको अलग से मेमोराइज ना करना पड़े। बट जस्ट इन केस कि अभी तक आपने उस तरीके से नहीं पढ़ाई किया तो लिस्ट बनाओ। मेक श्योर एक साइड पर ऑफिस लिखो, दूसरी साइड पर लिखो कि कौन उनको अपॉइंट करता है, फिर एक और वाला लिखो ऑफिस लिखो, फिर उसके बाजू में लिखो कि इसको वो रिज़ाइन करते हैं, कौन सी ओथ लेते हैं, कौन सा रिमूवल इज़ इन द हैंड्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड विच वन इज़ बाय डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर,
and so on and so forth, and also charged expenditures and non-charged expenditures. तो ये सब कुछ खुद करना पड़ेगा. ओके, ऐसा हल्के हल्के पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला. Make sure that you know complete preparation. Question number 63 coming your way. Which was the first day of the first session of the Constituent Assembly? तो ये हिस्ट्री ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको भी ढंग से करना ज़रूरी होता है. December 13, 1947, December 9, 1946, 3rd June 1947, January 26, 1950. Your time starts now. T minus 1 minute. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. 40 seconds. T minus 30 seconds. 30 seconds. ये तो डेट्स में 100% मालूम होनी चाहिए. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So the answer to this is 9 December 1946, the first day of the first session of the Constituent Assembly. तो 13 December 1947 का ऐसा कुछ मेरे को सिग्निफिकेंस मालूम नहीं. 3rd June of 1947 was the Lord Mountbatten Plan, also popularly called as the 3rd June Plan, जिसमें पहली बार the British Indians decided or rather principally accepted for the partition of British India into India and Pakistan. 26 January 1950 वो मुबारक दिन जिस दिन the enforcement of the Constitution of India took place. That is our Republic Day. तो ये सारी डेट्स तुम्हें मालूम होनी चाहिए. इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ मैं तुम्हें बता देता हूँ, जितने भी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स हैं सबका नाम मालूम होना चाहिए. पूरे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑल द वे जब से क्रिप्स मिशन आया, इनफैक्ट उससे भी पहले चले जाओ, फ्रॉम द ऑगस्ट ऑफ क्रिप्स मिशन, सेकंड कैबिनेट मिशन, माउंटबैटन प्लान, कैसे इलेक्शंस हुआ, यू नो हाउ मेनी सीट्स वेंट. सो 389 सीट्स हुआ था, 296 इलेक्शन में हुआ, 93 नॉमिनेटेड हुआ. फिर इलेक्शन हुआ तो 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिला, 73 मुस्लिम लीग को मिला, 15 अदर्स को मिला. ये सब कुछ तुम्हें बेसिकली मालूम होना चाहिए. अगर तुम्हें ये नहीं मालूम है तो दिस इज़ नॉट कॉल्ड रॉक सॉलिड प्रिपरेशन, दिस इज ओनली कॉल्ड टाइम पास प्रिपरेशन. तो डिसाइड कर लो कि तुम्हें रॉक सॉलिड प्रिपरेशन करना है कि टाइम पास प्रिपरेशन करना है. ओके, और अगर रॉक सॉलिड प्रिपरेशन करना है तो नीचे नाम लिखा हुआ दिख रहा है, डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा. कोड इज सेड लाइव SIDLIVE. यूज करो एंड मेक श्योर दैट यू गिव योरसेल्फ अ रियलिस्टिक चांस. Question number 64 coming your way. Which of the following fundamental rights prohibits the state from discriminating while granting funds to an educational institution on the basis of being run by a religious minority? A. Article 26, B. Article 27, C. Article 29, and D. Article 30. Your time starts now. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. 40 seconds. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. परफेक्ट. ऐसे तो चॉइसेस बहुत ही करीबी थे. ओके, चॉइस ज़्यादा करीब होने की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी. अगर ऐसे ब्रॉडली देखा जाए तो बताया जा सकता है, बट जब ऐसे चॉइसेस आ जाए 26, 27, 28, 29, 30, बताओ क्या आंसर दो. सो इसके लिए एक ही मेथड होता है दैट फर्स्ट यू शुड नो दैट आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 आर डीलिंग विद कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स. तो पहले इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो 26, 27 एलिमिनेट हो जाएगा. और फिर आर्टिकल 29 में तुम्हें पता चल जाएगा दैट एवरी सिटीजन और एनी सिटीजन और एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स within India or any part of India which has a distinct language, script or culture has the right to conserve the same. तो इसमें अभी तक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं आया. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का नाम आया आर्टिकल 30 में, दैट एवरी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हैज़ द राइट
to create or made or establish an educational institution of their own choice. अब इसमें स्टेट की इंटरफेरेंस है या नहीं है, कि वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, इसे दो पार्ट समझ में आते हैं. वन, द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट वाइल ग्रांटिंग फंड्स टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग रन बाय रिलीजियस माइनॉरिटी. एक तो ये हो गया. दूसरा कि अब स्टेट को ये लगता है कि कैन द स्टेट इंटरफेयर इन सम मैटर्स और नॉट. सो यहाँ पर आया था द वेरी फेमस केस विच वॉज कॉल्ड एज द TMA केस, जिसमें मणिपाल ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ये बात उठाई गई थी कि वी आर प्रैक्टिकली ऑटोनोमस टू डिसाइड व्हाट वी वांट टू डू. बट देन द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दिस मैटर दैट इट कैन नेवर बी सो, दैट इन नेशनल इंटरेस्ट द सुप्रीम कोर्ट विल ऑलवेज हैव द पावर टू द स्टेट विल ऑलवेज हैव द पावर टू इंटरफेयर. सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेना, और नहीं है तो एक बार प्लस क्लासेस देख लेना, देन यू विल अंडरस्टैंड कि आर्टिकल 30 की इंपॉर्टेंस क्या है. क्वेश्चन नंबर 65 कमिंग योर वे. विच कोर्ट कैन पास अ रिट to enforce a fundamental right of the citizen of India? A. High Court only. B. Supreme Court only. C. Both A and B. D. None of the above. The time starts now. T minus 50 seconds. 50 seconds. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. 30 seconds. Concentrate. और ये अब गलत जाने नहीं चाहिए, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है. T minus 20 seconds. 20 seconds more. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. परफेक्ट. यहाँ पर था एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स के लिए दोनों सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन डू दिस. सुप्रीम कोर्ट के लिए जो लैंग्वेज यूज किया जाता है वो ये आता है, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू इट ओनली फॉर वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बट हाई कोर्ट के लिए वाइडर पर्पस है बिकॉज वर्ड यूज किया गया फॉर एनी अदर पर्पस. सो आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 दोनों ही रिट्स है, लेकिन हाई कोर्ट के पास फंडामेंटल राइट एंड एनी अदर पर्पस यानी कि लीगल राइट्स भी है. सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कॉमन आ जाता है विद रिगार्ड्स टू फंडामेंटल राइट्स. सो बड़ा अच्छे से ट्विस्ट किया गया था क्वेश्चन को. And that brings us to question number 66. The first no confidence motion was moved against which of the following Prime Minister's government? A. Jawaharlal Nehru. B. Indira Gandhi. C. Atal Bihari Vajpayee. D. Narendra Modi. Your time starts now. T minus 1 minute. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. 40 seconds. T minus 30 seconds. T minus 20 First seconds. no confidence motion. Successful नहीं बोला. First no confidence motion moved. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So although I have already explained it in the video, but मैं फिर भी तुम्हें बता देता हूँ. It was soon after the 1962 Indo-China War that Acharya Kripalani ने move किया था no confidence motion against Jawaharlal Nehru government. Obviously they lost because Nehru साहब के पास इतनी strong majority थी, but it started the so-called ball started rolling. पहली बार the first no confidence motion was moved. It was unsuccessful. वाजपेयी साहब और नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ भी मूव किया गया है, मैडम इंदिरा गांधी के खिलाफ भी मूव किया गया है. तो फर्स्ट वन पूछा गया था वो जवाहरलाल नेहरू. एंड क्वेश्चन नंबर 67 कमिंग योर वे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. 1. राज्यसभा कैन अलाउ जनरल डिस्कशन ऑन बजटरी प्रपोजल्स. 2. Once passed by the Lok Sabha, the Rajya Sabha has only 7 days to pass or consider the budget. Which of these statement is or are true? 1 only, 2 only, both 1 and 2, none of the above. Your time starts now. T minus 1 minute. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. 40 seconds.
minus 30 seconds. T minus 20 seconds. 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. राज्यसभा और लोकसभा को डिस्टिंग्विश करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली इन केस ऑफ बजटरी प्रपोजल्स ऑफ मनी बिल। सो राज्यसभा में याद रखना इंट्रोडक्शन भी हो सकता है, जनरल डिस्कशन भी हो सकता है, और राज्यसभा ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स 10 मेंबर्स टू द डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी। सो 3 जगह पे रोल है। जहाँ पे रोल नहीं है वो है वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स पे एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द मनी बिल पे। Second important part is कि once the Lok Sabha passes the bill, the Rajya Sabha will have 14 days, not 7 days to pass or consider the budget. Rajya Sabha can also return the bill for the reconsideration with certain kind of amendments, propositions to the Lok Sabha, but Lok Sabha पे binding नहीं है. So only the first choice is correct. इसकी explanation देखनी है तो go and watch the video and तुम्हें पता चल जाएगा कि actually इसकी actual explanation है कितनी और in depth. और अगर तुम्हें इसको सही मायने में डिटेल में करना है तो मेरी प्लस क्लास अटेंड करो। मैंने बजट के लिए इतना डिटेल में पढ़ाया हुआ है दैट इट इज़ इम्पॉसिबल दैट माई प्लस स्टूडेंट्स falter on this part. So make sure that you have a greater opportunity of cracking this exam. Study in a rock solid manner. Which of the following article of the Constitution has been enforced by passing the Child Labour Prohibition and Regulation Act of 1986? A. Article 21. B. Article 23. C. Article 24. D. None of the above. The time starts now. T minus 50 seconds. 50 seconds. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. 20 seconds. देखो यार बेटे पता भी नहीं चलता where those 1 minute has gone. Make sure that you have very solid conceptual knowledge. वहाँ पर सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा and एग्जाम का प्रेशर सो अलग. So जो भी प्रिपरेशन करनी है यहीं कर लो. And the answer of course is Article 24, which deals with that the children will not be employed in factories, mines, etc. Article 21 is a broad article, वैसे तो वो सब में कवर हो जाता है, but is living with choice and dignity. And Article 23 is the one which is the begar and the forced labor and the Devdasi system and so on and so forth. So these are very specific questions and you have to be very very clear about that. तुम्हें practically सारे fundamental rights मालूम होने चाहिए. Question number 69 coming your way. Which among the following statements with regards to NHRC is or are true? A. NHRC is a statutory body under protection of Human Rights Act of 1993. B. The chairman of the National Commission of Scheduled Castes can be one of the ex officio member of the NHRC. Both A and B, none of the above. Your time starts now. T minus 50 seconds. NHRC पे मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि हाउ डज NHRC फंक्शन इन complementary to the judiciary as well as other mechanisms to ensure that the government is made accountable and there is protection of human rights. तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि एक्चुअली UPSC मेंस में भी आया हुआ है. तो NHRC इग्नोर करना इज लाइक डेंजरस एंड स्पेशली in the recent light of NHRC's role and the Office of Human Commission or the Commission of Human Rights of the United Nations. Entire thing has come to NHRC. Make sure that you know this. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Brilliant question, or both of them are absolutely correct. याद रखना वर्ड यूज किया गया था एक्स ऑफिशियल मेंबर. तो चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR, as well as the persons with disabilities is now included as an ex officio members of NHRC. And NHRC is certainly a statutory body under protection of Human Rights Act of 1993, which was formed after India decided to manifest the principles of Paris, that is Paris Principles of 1992.
तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. मेक श्योर दैट यू नो दिस कंप्लीटली. एंड ब्रिंगिंग अस टू क्वेश्चन नंबर 70. Which landmark judgment of the Supreme Court is popularly known as Mandal case? A. Hanif Qureshi case. B. Maneka Gandhi case. C. S.R. Bomay case. D. Indira Sani case. The time starts now. T minus 50 seconds. 50 seconds. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8. सारी लैंडमार्क जजमेंट्स ढंग से पढ़ लेना. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दे विल आस्क यू आइदर डायरेक्टली एज नेम और फ्रॉम विद इन. You will be asked the concept of this part. And a very famous case, Mandal case, which was the Indira Sani case. Indira Gandhi Sani case was a PL which was filed before the Honorable Supreme Court soon after the Mandal Commission recommendations of 27% reservation for OBCs was accepted by the government and enforced. Right. So, क्योंकि ज़्यादातर provisions was related to Mandal case, this popular or Mandal Commission recommendation, this case is called as the Mandal case. So, अब तुम्हें पता चलेगा कि actually कैसे पढ़ना है. Okay. सो मैं फिर बोलता हूँ, दो तरह की प्रिपरेशन होती है. एक टाइम पास प्रिपरेशन, एक रॉक सॉलिड प्रिपरेशन. टाइम पास प्रिपरेशन तो सब लोग ही कर रहे होते हैं. रॉक सॉलिड प्रिपरेशन 24 कैरेट करनी है. सो मेक श्योर दैट यू जॉइन माई कोर्सेज यूजिंग द स्पेशल कोड सेट लाइव एंड गेट इमीडिएट 10% डिस्काउंट. सो यू कैन टेक अ seconds breather and we will start with the next round of question number 71 to 80. Also remember that if you are planning to join Unacademy for your preparation for UPSC, make sure that you do it before 28th of April. 28 अप्रैल तो पहले लोगे तो तुम्हें दो एडवांटेजेस होंगे. वन, you will get 20 books absolutely created by best UPSC experts on Unacademy worth ₹10,000 तुमको फ्री मिल जाएगी. एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएगी. और इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, इसमें करंट अफेयर्स भी है एंड एवरीथिंग. पूरा का पूरा सिलेबस विल बी कंप्लीटेड. And all you have to remember, the one code is the code called as SEDLIVE. Also that you will get an extended offer. एक साल का कोर्स एक साल का नहीं रहेगा, तब तक एक्सटेंड होगा जब तक कि नेक्स्ट ईयर का प्रीलिम्स नहीं हो जाता. और 2 साल का कोर्स 2 साल का ना रहेगा, तब तक एक्सटेंड हो जाता जब तक 2023 का प्रीलिम्स नहीं हो जाता. क्वेश्चन नंबर 71 कमिंग योर वे. दोस ऑफ यू जिनको इसके एक्सप्लेनेशन की उम्मीद है, प्लीज स्टार्ट वॉचिंग द वीडियोज. एंड वंस यू वॉच द वीडियोज ऑफ दिस सेम सीरीज, you will be able to understand and get the explanation of this part. Consider the following statement with reference to the Election Commission of India. 1. The Election Commission of India is responsible to announce the dates and the schedule of the elections of the Parliament. 2. Election Commission of India gets constitutional sanction under Article 324 of the Constitution. 3. Maximum sanction strength of the Election Commission of India is 3 members as mentioned in the Constitution of India. Which of the statements given above is or are correct? A. 1 only. B. 1 and 2 only. C. 1, 2 and 3. D. None of the above. T minus 1 minute. T minus 50 seconds. Pay attention to every word. Election Commission of India is responsible to announce the dates and schedule of the election of the Parliament. Election Commission of India gets constitutional sanction from Article 324 of the Constitution. Maximum sanction strength of the Election Commission of India is 3 members as mentioned in the Constitution of India. Prefix and suffix दोनों पे ध्यान दो. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alright, that is the time. देखो 1 minute ही मिलता है and then you realize what is the answer. Answer is 1 and 2 only. The maximum sanction strength of the Election Commission of India is 3 members. ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ. It is presently 3 members. Right, does not mean that it is mentioned as maximum sanction strength.
as mentioned in the Constitution of India. Constitution of India में लिखा है that the President of India will decide the number of members of Election Commission of India only as many as required at that time. So please make sure prefix और suffix को जरूर ध्यान से देखा करो, otherwise you will come in a trap and you are bound to make a mistake. Question number 72 coming your way. With regards to the following offices, select the correct combination of the High Court and its area of jurisdiction. 1. Calcutta High Court, Andaman Nicobar Islands. 2. Kerala High Court, Puducherry. 3. Bombay High Court, Daman and Diu. 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, none of the above. Your time starts now. T minus 1 minute. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. 40 seconds. पता भी नहीं चलता. So what do? You look at a high court, you look at that area of jurisdiction, match करने की कोशिश करो. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Absolutely, इसमें करेक्ट वाले पता चल गए हैं और रॉन्ग वाला अपने आप रह जाएगा. सो कैलकाटा हाई कोर्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में सर्किट बेंच मेंटेन करता है. बॉम्बे हाई कोर्ट दामन एंड ड्यू के ऊपर जुरिस्डिक्शन है. केरला हाई कोर्ट का कोई लेना देना नहीं. पुडुचेरी का इट इज टू डील विद मद्रास हाई कोर्ट. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है. मैं हमेशा लास्ट टाइम भी मैंने जब इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी तो मैं फिर से रिपीट कर देता. तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस पार्ट. तो ज़्यादातर स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट पढ़ लेते हैं, फिर बहुत ही कम लोग हाई कोर्ट तक पढ़ पाते हैं. हाई कोर्ट के बाद भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद भी देयर आर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और ग्राम न्यायालय एक्ट्स एंड सो ऑन सो फोर्थ जो आपको करना ज़रूरी है. सो डोंट स्टार्ट जस्ट फिनिशिंग ऑफ द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन. दैट एज आई सेड इट्स कॉल्ड एज टाइम पास प्रिपरेशन. जो लगता है कि प्रिपरेशन हो रहा है बट इट इज़ नॉट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन. अगर रॉक सॉलिड प्रिपरेशन करना है तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरा काम है तुम्हें समझाना. नीचे नाम लिखा हुआ डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा. यूज द कोड सेड लाइव, जॉइन अस इन द प्लस क्लासेस and we will tell you what is rock solid preparation. Where is Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration located? A. Nainital. B. Mussoorie. C. Lucknow. D. New Delhi. T minus 1 minute. Where is Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration located? A. Nainital. B. Mussoorie. C. Lucknow. D. New Delhi. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं आता तो ट्रेजेडी हो जाएगी. Because this is the question for which you are preparing. T minus This is the 20 place for seconds. which you are preparing. अब मैंने इससे बड़ी हिंट क्या दूँ? 10, 9, 8, 7. So the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration ही पॉपुलरली बोला जाता है लबासना, which is located at मसूरी. अगर तुमने ये गलत कर दिया है तो भाई तुमने यूपीएससी का फॉर्म गलती से भर दिया. ओके, तुमने कोई और फॉर्म भरना चाहिए बिकॉज तुम्हें यही नहीं मालूम है कि तुम्हारी मंजिल कहाँ है. येस, ऑल ऑफ यू, वंस यू क्लियर दिस एग्जामिनेशन you will be sent to Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration for your initial training before you become the future bureaucrats of this country. So Lavasna is located at Mussoorie. और ये क्वेश्चन बिल्कुल ही ट्विस्ट क्वेश्चन. अगर गलत आया तो किसी को पता ना मत कि तुमने गलत किया. Question number 74 coming your way. Which of the following article deals with the definition of the word state? A. Article 12. B. Article 36. C. Both A and B. D. Article 13. T minus 1 minute. Time stops. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. 40 seconds to go. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds.
beautiful coincidence, a beautiful pattern of our constitution says Article 12, which is a part of Part 3 of the constitution में लिखा हुआ है, the state shall include Parliament of India, Legislature of India, Government of India, Government of the states, any other local or any other authority which is within India or under the control of Government of India. और मज़ेदार बात यह है कि Article 36, which is the first article of Part 4 of the Constitution, also says that in this part of the Constitution, unless the context otherwise states, that the word state shall have the same meaning as given in Part 3 of the Constitution. बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और यहाँ पर फिर हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं कि क्या Part 3 और Part 4 सेम है या फिर एक जैसा है या उसमें कोई कॉमनैलिटी है या फिर ये स्टेट और वो स्टेट फ़र्क है या बोथ ऑफ देम राइट्स या बोथ ऑफ देम आर डायरेक्शन. तो एक बड़ी ब्यूटीफुल सी डिस्कशन होती है एंड देन उससे क्लैरिटी आती है, राइट. एंड ऑब्वियसली अभी के लिए तो तुम्हारे लिए आंसर इज बोथ ए एंड बी. तो मेरे प्लस वाले स्टूडेंट्स तो बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, बाकी लोग देखते हैं क्या करते हैं. विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट? ए मॉस्को, बी बेलग्रेड, सी न्यू दिल्ली, डी कोलंबो. Which city hosted the first conference of the non-aligned movement? A. Moscow, B. Belgrade, C. New Delhi, D. Colombo. Your time starts now. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. 40 seconds. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. Ten, 9, Perfect. 8. नॉन-अलाइन मूवमेंट इंटरनेशनल रिलेशंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज इनिशियल नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी का इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट था. आज हम लोग इसको इतना रेलेवेंस नहीं देते बट इट वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एट दैट टाइम एंड द फर्स्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड और रादर होस्टेड इन बेलग्रेड. सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था. तो यूगोस्लाविया का क्या रोल था फॉर दैट मैटर, टीटो का क्या रोल था, सुकार्नो का क्या रोल था, नेहरू का क्या रोल था, एंड ऑल दोज थिंग्स have to be all understood with non-aligned movement. Yes, it came down, उसका relevance कम हो गया था, especially after the 1962 Indo-China war. That debacle was also the debacle of non-aligned movement. But it is very very important that you pay attention to what this initial Nehruvian foreign policy was all about. Question number 76 coming your way. Who amongst the following is responsible for appointment of judges of the High Court of the states? A. President of India, B. Chief Justice of India, C. Governor of the concerned state, D. Attorney General of India. Who amongst the following is responsible for appointment of the judges of the High Court of the states? याद रखना appointment. T minus 1 minute. मैं फिर बोल रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ज़्यादातर लोग पढ़ लेते हैं बट हाई कोर्ट पर आते आते लोग इग्नोर कर बैठते हैं. एंड देयर आर सम वेरी फनी एंड इंटरेस्टिंग distinctions between the Supreme Court and the High Court. Similarly, whether it is with regards to their powers or their roles or their appointments or resignations or whatever. Okay, so you have to be very very careful on this part. Salary kahan se aati hai and so on. So very fine, very fine differences, but you should be all aware of this completely in and out. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. All right, and that marks the end of it. But एग्जाम में डिस्टिंक्शन बता रहा था, वो डिस्टिंक्शन तो थी लेकिन इस केस में डिस्टिंक्शन नहीं थी. बताओ, ये भी भाई बात है. मैंने जानबूझकर तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश तो नहीं की थी, लेकिन सही बात मैं मानने में कि बहुत सारी जगह सिमिलैरिटीज़ है, कहीं कहीं डिसिमिलैरिटीज़ है. इस केस में सिमिलैरिटी है. That as you say that for the Supreme Court judge, it is appointed by he is appointed by the President of India. Similarly, the High Court judges are also appointed by the President of India. However, there is a small difference. That there shall be consultation by the President with the Governor of that concerned state, as well as by the judge, by the Chief Justice of that concerned High Court. So that is only consultation. Does not mean that he is not appointed by him. So यहाँ पे छोटे छोटे differences as I told you. मैं prefixes और suffixes पे बड़ा ध्यान दूँ.
और ये प्रीफिक्सेस सफिक्सेस तुम खुद करने की कोशिश करते हो ना, बेहोश होकर गिरोगे, बिकॉज तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है. Because and that is why people start considering polity as a very difficult subject, which it is certainly, but एक तरीका है. And that is the reason why जब मैंने plus classes लिया and then thousands of people have joined me. टीम सेट लाइव अनअकैडमी की सबसे बड़ी टीम हो गई, और उसका सबसे ज़्यादा जो मुझे कमेंट्स मिले वो मिले कि सर यू हैव सिंप्लीफाइड एंड मेड द सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग. तो ये बड़ा ज़रूरी था कि इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाया जाए, और एज कंसर्न इंडियन सिटीजन तुम्हें ये आना भी चाहिए, एंड फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स के तौर पे तो 100% आना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 77 कमिंग योर वे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. 1. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज. मतलब द सेम क्वालिफिकेशन ऐसे होने चाहिए दैट इज फॉर अ सुप्रीम कोर्ट जज. 2. He can be removed by impeachment by the parliament. 3. He must be a member of either the Lok Sabha or the Rajya Sabha. 4. He can attend parliamentary proceedings. Which of these statements is or are true? 1 only, 2 and 3 only, 1 and 4 only, all of the above. T minus 1 minute. T minus 50 seconds. 50 seconds. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. 30 seconds. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7. Attorney General of India is another one of those topics जिसको लोग ignore करके बैठ जाते हैं. Okay, they don't understand he's a part of the union executive as much as is anyone else because it is very very important. तो इसकी मैंने explanation already किया हुआ है in the videos that is considered. So go back to the video of this same series and you will understand about Attorney General of India. But obviously इसमें important part ये है कि he cannot be removed by impeachment because impeachment word actually जो use किया केवल Article 60 में use हुआ है for the Article 61 में sorry for the removal of the president, or he must be a member of either Lok Sabha or Rajya Sabha. Certainly not because he is a union executive. Certainly he can attend parliamentary proceedings, इसमें कोई doubt नहीं है, but he cannot vote during the parliamentary proceedings. Brings us to question number 78. Which of the following high courts have territorial jurisdiction over Andaman and Nicobar Islands? बताओ. A. Madras High Court. B. Calcutta High Court. C. Guwahati High Court. D. Telangana High Court. So we have 4 high courts और तुम्हारे सामने है area और territorial jurisdiction. और time starts now. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. 20 seconds to go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Absolutely. अभी मैंने थोड़े टाइम पहले ये एक्चुअली क्वेश्चन पूछा ही था इन अ डिफरेंट रेपिटेशन. ओके, जब मैंने मैच द फॉलोइंग बोला था, दिस आंसर कुड बी हैव बीन द सेम, बट आइदर वे इज कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट अगेन एंड अगेन. प्लीज डोंट इग्नोर हाई कोर्ट्स, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन, और इसको अच्छे से पढ़ लेना. क्वेश्चन नंबर 79 कमिंग योर वे. The primary function of the Finance Commission of India is to A. Prepare the annual budget. B. Allocate funds to various ministries of the union government. अब ये एक्चुअली थोड़ा सा फर्क है. जो सेकेंड वाला पॉइंट है, इसको कंसिडर दिस एज नॉट द यूनियन गवर्नमेंट बट द स्टेट गवर्नमेंट. तो एक मैं चेंज कर देता हूँ, फिर तुम लोगों को लगेगा ये मैंने क्या बता दिया. सो दिस इज नॉट द यूनियन गवर्नमेंट, ओके, दिस इज द स्टेट गवर्नमेंट. सो कंसिडर दिस एज स्टेट गवर्नमेंट and that should be enough for you to understand. Okay, proposed distribution of revenue between the center and the states. T minus 1 minute. Your time starts now.
minus 50 seconds. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. Now you know polity पढ़ते कैसे. T minus 20 Now you know seconds. what is rock solid preparation. Now you know कि क्या करना ज़रूरी होता है. कि एक सिर्फ एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो कि टाइम पास कर रहे हो. Make sure that you know 10, this. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alright, and the answer of course is proposition of revenue, distribution of revenue between the center and the states. Annual budget finance commission का provision हो नहीं सकता. It is a constitutional body under article 280. ना इसका allocation of funds को ज़रूरत है, ना something. It is merely proposing the distribution of revenue between the center and the states. Hence a very important instrument of fiscal federalism, but that's the end of it. इनकी recommendations are also not binding on the government. सिर्फ इतना बोला गया है that the finance commission will submit its report to the president and the president shall table it into the parliament. अब इसका मतलब सिर्फ ये है कि recommendations को discuss किया जाएगा. It is not binding on the government. Bringing us to question number 80 and focus very hard. Which activist lawyer amongst the following is associated with, and I quote, Taj trapezium case? MC Mehta, Subramanian Swamy, Sundarlal Bahuguna या मेधा पाटकर. T minus 1 minute. इन सब लोगों की कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन ज़रूर है, ओके. लेकिन व्हाट आर वी टॉकिंग ऑफ इज द ताज ट्रेपेजियम केस. मैं फिर बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स, रीसेंट जजमेंट्स, उनका ईयर्स वगैरह ना भी याद रखो, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग यू शुड नो कि ये इस केस का क्या लेना देना है. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. दिस two, एक्टिविस्ट जेंटलमैन one. लॉयर मिस्टर MC मेहता, इन्होंने इतने सारे केसेस किए हुए, ऑल ऑफ देम नोन एट वेरियस ईयर्स एंड वेरियस टाइम पीरियड्स एज MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वेरियस केसेस व ताज ट्रेपेजियम केस, कानपुर टैनरी केस which dealt with the pollution of Ganga river, the DTC CNG case, the illegal Chhattisgarh mining case, the oleum leakage cases, and you name it. Just saying thanks to him, it's such a very important part of our small little consideration and a small little thanks to Mr. MC Mehta for all the work that he has done for India through his public interest litigation. So very very important Taj trapezium case. Also अब तुम्हें मालूम पड़ गया कि कितना होलसम प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है. ओके, तुमने से 2 पेजेस पढ़े फिर थक के सो गए, या फिर तुमने अपनी अपनी मर्जी से पढ़ा, किसी ने ये स्टडी मटेरियल बता दिया, वो बता दिया, won't help you out. You require what is called 24-karat preparation, rock solid preparation, and not time pass preparation. So you want to do this. नीचे आता हुआ चीज़ को ध्यान से देखो. Join my courses by using special code SIDLIVE SIDLIVE and get an immediate 10% discount. कई बार में तुम्हें लगता होगा मैं बार बार बोल रहा हूँ, बट एक अच्छी चीज़ है, ज़रूरी है तुम्हारे करियर के लिए. मेरा काम है तुम्हें समझाना. You're a wise guy and students, take a wise decision, but take it now. We are going to the next set of questions. Get ready now. So before I start, okay, please remember कि अगर तुमने Unacademy की ये सब्सक्रिप्शन लेनी है, तुम take it before 28th of April. तुम्हें 20 books which are created by the best of UPSC experts worth ₹10,000 free of cost मिलेगी, जिसमें सारा का सारा सिलेबस कवर होगा, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर्ड है एंड अपडेटेड विद करंट अफेयर्स. सिर्फ तुम्हें जो याद रखना है वो याद रखना है द कोड SIDLIVE SIDLIVE. SIDLIVE कोड यूज़ करो. Okay, become a part of Team SIDLIVE, which is the largest team on Unacademy, as well as you'll get 10% discount and huge advantages. And let's start with question number 81. So let's go to question number 81 now. Which amongst the following is not true with regards to a no confidence motion? Not true की बात की गई है. A, its procedure, it's described under Article 75 of the Constitution. B, the motion must state the reasons on the basis of which
द हाउस हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट. एक एक वर्ड को ध्यान से देखो. सी रिक्वायर्स अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 present and voting to be considered as passed in the Lok Sabha, and D all of the above. बिल्कुल ध्यान से देखो. Your time starts now. इन सब की एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हो चुकी है, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा तुमको सोचने के लिए. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. 30 seconds. जब पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी जाता है स्पीड पे. नाउ यू रियलाइज कि तुम्हें कितना इंटेंस प्रिपरेशन होनी चाहिए. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. एब्सोल्युटली परफेक्ट. और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन अपने आप में एक बड़ा डाइसी चीज़ है. प्लीज़ रिमेंबर दैट इट इज़ नॉट ट्रू. दोनों ही तीनों ही रॉन्ग है. इनफैक्ट ना तो तुमको रीज़न बताना पड़ता है, ना इट इज़ रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर जब भी पास करना होगा तो सिंपल मेजोरिटी से पास करना होगा. प्लीज़ रिमेंबर, ये मैंने बहुत क्लास में इतना ज़्यादा डिटेल में किया हुआ है दैट नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, ऑलराइट, ये एक रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द लोकसभा में लिखा हुआ है. इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद द कॉन्स्टिट्यूशन. Yes, it is derived or motivated from Article 75, but not described. So beautiful question. और इसको पढ़ते टाइम ये बड़े आराम से ट्रिक क्वेश्चन किया जा सकता है बाय द UPSC एट दैट स्टेज. तो उस टाइम में बड़े ध्यान से करना. मेक श्योर अगर इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है तो एक बार प्लीज़ देख लो वीडियो को एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस वेरी फार. क्वेश्चन नंबर 82 कमिंग योर वे. Question number 82. Which amongst the following is not a member of the Shanghai Cooperation Organization? A. Russia. B. Kazakhstan. C. Kyrgyzstan. D. Ukraine. Your time starts now. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. 40 seconds to go. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. 20 seconds. Pay attention. SCO. तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट के चक्कर में मत कंफ्यूज हो जाना, जो ज़्यादातर लोग होते हैं. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. एब्सोल्युटली. जो मेरे ख्याल से ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है वो यू की वजह से हो जाता है. यू इज़ नॉट यूक्रेन, यू इज़ उज़्बेकिस्तान. सो रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान. सो बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो ज़्यादातर लोग यू से कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है यूक्रेन है. ओके, सो इट इज़ नॉट यूक्रेन, इट इज़ उज़्बेकिस्तान. एंड मेक श्योर दैट SCO तुमको कंप्लीटली इन डिटेल मालूम हो. वन बेल्ट वन रोड, everything should be absolutely understood. One belt one road policy, the entire Chinese expansionist policy must be very very clear whether you like it or not. Okay, तुम ये liking का काम थोड़ा है. You are students of the international diplomacy and international relations. You should know everything in and out about Chinese expansionist policy and also how the world is trying to compensate with that part. Question number 83 coming your way. Which date is mentioned on the preamble of the Constitution? Date mentioned on the preamble: A. November 26, 1949. B. November 26, 1950. C. January 26, 1950. D. January 26, 1949. पेन रखकर आंसर दो. एक भी गलत करोगे गड़बड़ हो जाएगा. So डेट को अलग देखो, मंथ को अलग देखो और ईयर को अलग देखो, otherwise you will be in trouble. T minus 50 seconds. थोड़ा बहुत तो तुमको रियलाइज हो ही रहा होगा कि पॉलिटी पढ़ते कैसे, राइट? तो ऐसा किताब खोल के देख लेना, उसको बार बार देखते रहने से कुछ नहीं होने वाला. यू हैव टू एब्सोल्युटली हैव रॉक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग, मैट्रिक्स प्रिपरेशन, देन ओनली यू विल बी एबल टू टैकल दिस एग्जाम. अदरवाइज UPSC के फॉर्म में भरते रह जाओगे. T minus 30 seconds.
30 seconds to go. T minus 20 seconds. मैं तुम्हें बार बार ये बात बता चुका हूँ. Preamble is one of those most favorite topics of UPSC examiner, and they are bound to ask you this question again and again. Make sure that you know everything about the preamble in and out. And of course, the answer to this is November 26, 1949. That is choice number A. और ये तुम्हें इतने अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए जितना तुम्हें अपना बर्थडे याद है. और पूरा का पूरा preamble तुम्हें मेमोराइज होना चाहिए like it is. Twinkle twinkle little star की तरह. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, liberty of equality of status and opportunity, fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly on this 26th day of November 49, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. जय हिंद. इतना प्राउडली और इतने स्पीड से preamble याद करो. Next question, question number 84. Which of the following is not an all India service? A. Indian Administrative Service. B. Indian Police Service. C. Indian Revenue Service. D. All of the above. Your time starts now. ये नहीं आता होगा ना, यूपीएससी का फॉर्म देख लेना. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. 40 seconds to go. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. परफेक्ट. अभी ऑल इंडिया सर्विस के लिए तो तुम्हें मालूम ही होना चाहिए. अगर तुम्हें ये नहीं मालूम होता तो बड़ा दुख की बात है. सिंस यू आर अबाउट टू अपीयर फॉर एन एग्जाम जिसमें तुम्हारा मेन एम होना ही चाहिए ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए. ऑफ कोर्स आई एम नॉट डिग्रेडिंग एनी अदर सर्विसेज और रादर डिमोटिंग एनी अदर सर्विस और रादर डिस्करेजिंग. ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा. बट ऑल इंडिया सर्विस ऑफ कोर्स द क्रेम द ला क्रेम will always try to go for all India services. उसमें 3 all India services है. One is Indian Administrative, one is Indian Police Service, और obviously तुम्हें उसके लिए अलग से एग्जाम देना पड़ेगा. That is Indian Forest Services also. Indian Revenue Services is for most common purposes. Do not know this is a central government services. So Article 312 of the Constitution उठा के देखोगे तो तुम्हें 3 all India services दिखेंगी. और तुम्हें एक चीज़ also remind में करा देता हूँ, अगर तुम लोगों ने previous मेरा अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने already explanation दिया हुआ है, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है. Article 312 will also look after or rather will also include what is called as Indian Judicial Services as and when ये बनेगा. अगर बनेगा, I don't know, जब बनेगा तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन हो सकता है और तुम्हें ये सब मालूम होना चाहिए. और अगर नहीं मालूम है तो तुम यूपीएससी के फॉर्म से भी पास कर सकते हो ये. Alright, question number 85. Which of the following is true with regards to promulgation of ordinance by the President? A. Provided under Article 213 of the Constitution. B. Must be ratified by the Parliament within 6 weeks of the beginning of a new session to continue in force. Both A and B. D. None of the above. Which of the following is true? True पूछा गया है. The time starts now. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. 20 seconds. Ordinances is something which is always debated, whether in the courts or in the normal political circles or for that matter in your UPSC exam. But तुम्हें basic facts मालूम होने चाहिए. When you are talking about the president, it is not Article 123, it is Article, it is not Article 213, it is Article 123. But yes, it must be ratified by the Parliament within 6 weeks
of the beginning of the new session to continue on first. तो एक बार जब इसके एक्सप्लेनेशन देखोगे तो तुम्हें मैंने उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन में किया हुआ है इनफैक्ट, और मेरी प्लस क्लासेस को अटेंड करो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि ऑर्डिनेंसेस वो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है जब लॉर्ड कैनिंग ने इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 में इसको इंट्रोड्यूस किया था, द एग्जीक्यूटिव शुड बी अलाउड टू पास लॉज व्हेन द लेजिस्लेटिव इज एब्सेंट। फिर हमने आर्टिकल 123 एंड आर्टिकल 213 में ले लिया था। बाय द वे आर्टिकल 213 जो है वो प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस बाय द गवर्नर है, राइट। फिर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से स्टेट लिस्ट, कौन सी लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल में प्रेसिडेंट कैन मेक द लॉज, कैन वी नॉट मेक लॉज। फिर SR बोमा की जजमेंट आ जाती है कि ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल प्रेसिडेंट कौन कौन से ऑर्डिनेंसेस पास कर सकते हैं, नहीं कर सकते, what is the ordinance Siraj and so on and so forth, and money bill ka and so on so the Rustamji Kawasi Cooper, that is RC Cooper versus Union of India, the bank nationalization case, uska concept, SR Bomai ka concept, DC Wadhwa cases, I mean it is a complete one day job और इतना डिटेल में तुम्हें ऑर्डिनेंसेस आना चाहिए that any type of question that you ask you should be able to answer this part. Question number 86 coming your way. अब तक तुम्हें थोड़ा बहुत रियलाइज़ हो ही गया होगा, मुझे से उम्मीद है कि तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल गए होंगे कि पॉलिटी पढ़ते कैसे है, राइट। टाइम पास नहीं करते, मेक हैपन व्हाट इज कॉल्ड एज रॉक सॉलिड प्रिपरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 86, ए मेघालय, बी नागालैंड, सी आसाम एंड डी मिजोरम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? मेघालय, नागालैंड, Assam and Mizoram. Your time starts now. T minus 1 minute. T minus 50 seconds. 50 seconds. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4. शेड्यूल्स को जितने शेड्यूल्स है, ओके, मेक श्योर दैट यू हैव अ लिस्ट ऑफ देम एंड पुट इट अक्रॉस ऑन द वॉल जहाँ पे तुम पढ़ाई करते हो, बिकॉज शेड्यूल्स पे जो क्वेश्चन आते हैं वो एक्चुअली बोनस क्वेश्चन होते हैं। यू मस्ट नो ऑल द शेड्यूल्स, सारे के सारे 12 शेड्यूल्स तुम्हें मालूम होना चाहिए। 6th शेड्यूल ऑफकोर्स तुम्हें मालूम होना चाहिए। इट डील्स विद द शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। नथिंग टू डू विद नागालैंड, इट हैज़ नॉथिंग टू डू विद नागालैंड एट ऑल। लेकिन सारे के सारे शेड्यूल्स मालूम होने चाहिए तुम्हें इन एंड आउट। सो शेड्यूल 1 इज यूनियन एंड टेरिटरी, 2 इज सैलरी अलाउंस एंड मॉल्यूमेंट्स, 3rd is oath and affirmation, 4th is absolute number of Rajya Sabha seats, 5th schedule is scheduled tribes for all other states, 6th schedule is for Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram, 7th schedule is union list, state list, concurrent list, 8th schedule is official languages, 9th schedule is land reforms, 10th schedule is anti-defection, 11th schedule is panchayats and 12th schedule is municipalities. इतना ही स्पीड में मेमोराइज करो तब जाके तुम्हारे कुछ बात बनेगी। गिव योरसेल्फ अ रियलिस्टिक चांस। और अगर खुद से नहीं हो रहा है तो ऐसे इंतज़ार मत करते रहो, अपने आप से कुछ नहीं होने वाला होता। यू टू गेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन। नीचे नाम दिख रहा होगा डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। सेट लाइव यूज़ करो एंड जॉइन माई प्लस क्लासेस, आई विल बी वेरी हैप्पी टू टीच यू। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर कॉन्टेस्टिंग एन इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? याद रखना, डिस्क्वालिफिकेशन पूछा गया फॉर कॉन्टेस्टिंग एन इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ए बीइंग द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, B being the vice president of India, C being a union minister, D none of the above. पूछा गया डिस्क्वालिफिकेशन फॉर कॉन्टेस्टिंग एन इलेक्शन, फॉर बीइंग एन इलेक्शन नहीं किया। बताओ मैं तुम्हारी कितनी मदद करता हूँ। फॉर कॉन्टेस्टिंग, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। T minus 1 minute. T minus 50 seconds. 50 seconds. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. 10,
10, 9, 8, 7, याद रखना डिस्क्वालिफिकेशन वो कॉन्टेस्टिंग इन इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इनमें से कोई भी नहीं है। क्या बात कर रहे हो? यस, बीइंग द प्रेसिडेंट की बात अलग होती, टू बी ऑक्यूपाइंग द ऑफिस वो बात अलग हो जाती। बीइंग होल्डिंग अ डिस्क्वालिफिकेशन ओनली फॉर होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्टर, डजंट मैटर। अगर सिंपल सी बात यहाँ पे याद रखनी, यू शुड बी 35 years of age, you should not be holding an office of profit, you should be a citizen of India, and very very important that you should have all the qualifications of becoming a Lok Sabha member। मेरी बात ध्यान से सुनने वाली बात है, मैंने बोला you should have all the qualifications of becoming a Lok Sabha member as given under Article 84 of the Constitution। कहीं नहीं लिखा हुआ डिस्क्वालिफिकेशन, तो सिंपल सी पावर पॉइंट था। ये जानबूझ के कन्फ्यूजन क्या है? येस, वंस यू ऑक्यूपाई द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, तुम जीत गए, एंड देन यू बिकम द प्रेसिडेंट, देन यू हैव टू क्विट द अदर ऑफिस, बिकॉज इंडिया में डबल ऑफिस का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो एक ही टाइम में मैं दो काम नहीं कर सकता। सिंपल एज दैट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, बट बड़े अच्छे तरह से ट्रैप किया जा सकता है। और इस बारे में जो अगर तुमने ABCD गेस वर्क किया है तो कुछ चलेगा नहीं। इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है, गो टू द प्रीवियस वीडियो एंड वॉच दैट पार्ट। Alright, question number 88. Which article deals with the special provisions for the state of Goa? A. Article 370, B. Article 371 capital I, B. C. Article 371 capital A, and none of the above. Which article deals with special provisions for the state of Goa? Your time starts now. T minus 1 minute. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. 40 seconds to go. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. 20 seconds to go. 10, 9, 8. कभी कभी एग्जामिनर की इच्छा होती है तो वो इस तरह के चॉइसेस दे देता है तो तुम बच जाते हो, अदरवाइज यू कुड हैव बीन वेरी इजीली ट्रैप्ड इन दिस पार्ट, बिकॉज अगर मैं 371 के साथ साथ और कोई आगे अल्फ़ाबेट लगा देता तो इट कुड हैव बीन वेरी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर यू। 370 was for erstwhile Jammu and Kashmir, 371A is for Nagaland, 371I बच गया था। ओके, तो अगर मैं इसमें ABCD की जगह I के साथ साथ और 3-4 BCDEF लगा देता तो इट कुड हैव बिकम वेरी डेंजरस फॉर यू। Either ways, कभी कभी एग्जामिनर बख्श देता है। ओके, डज नॉट मीन दैट यू डू नॉट डू दिस scrupulously and don't do it in detail. Make sure that Article 371 के सारे provisions लगा दो। Please don't mix it with 370, वो अलग है ये अलग है। Make sure that you know this completely. All right, and that brings us to question number 89. तो मैंने अपने प्लस क्लासेस में 371 पर एक पूरी क्लास पढ़ाई थी। ओके, जस्ट टू इंश्योर कि उनको 371 अलग से समझ में आए, द स्टोरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अलग से पढ़ाए आए। एक तरीका होता है पढ़ाने का, एक तरीका होता है पढ़ने का। ओके, एंड दैट्स व्हाट यू वांट टू डू। Which amongst the following statements with regards to the Supreme Court is not true? Not true पूछा गया है, don't get confused. A. Constitutional bench must at least be comprised of 5 judges. B. Constitutional bench is formed under Article 145 of the Constitution. C. Constitutional bench is formed at the discretion of the Chief Justice of India. None of the above. मेरे जितने प्लस क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो जोर जोर से चिल्ला रहे होंगे ओके कि इसका आंसर क्या है, बट चिल्लाओ मत यार, आंसर दो। T minus 1 minute. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. 40 seconds to go. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. 20 seconds to go. कितनी जल्दी जाता है। अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट आएगा नहीं तुम इसको सोचोगे कैसे? अब जब तुम्हें आता हो ना तो मेक श्योर दैट यू रीड इट वेरी प्रॉपर्ली। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तब बनाया जाता है व्हेन देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
दुनिया की कोई ताकत एक्सेप्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डज नॉट हैव एनी एक्सेप्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नोबडी कैन डिसाइड वेदर नॉट टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच. अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड्स देन ही हैज टू यूज आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन ही कंप्राइजेस द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच. कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मिनिमम नंबर ऑफ जजेस आर 5, उससे बड़ा विल बी 7, उससे बड़ा विल बी 9, उससे बड़ा विल बी 11, उससे बड़ा विल 13 होगा तो केशवानंद भारती जजमेंट. ओहो, सो वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. अब तो मैं समझ में आ रहा होगा कि एक बार इस फ्लो में समझ में आ गया ना, सब कुछ आ गया ना, तो पता भी नहीं चलेगा एंड योर ब्रेन विल स्टार्ट फॉर्मिंग कनेक्शन. दैट इज वाई मोस्ट पीपल स्टार्ट मेरे स्टूडेंट्स इस स्टेज में से 3-4 साल 3-4 बार महीने 1 साल पढ़ने के बाद उनको मैं ही कंफ्यूज नहीं कर पाता बिकॉज मैंने उनको तरीका बता दिया हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम. सो क्वेश्चन नंबर 90, विच अमंग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग स्टार्ड क्वेश्चन, तारांकित प्रश्न asked during question hour of the parliament. A, supplementary questions are allowed to be asked to the minister. B, not more than 20 starred questions can be asked per question hour. C, in the Lok Sabha it is the speaker who finally decides whether a particular question must be starred or unstarred. या फिर all of the above. बड़े ध्यान से choices देखो, पर टाइम उतना ही मिलेगा. Your time starts now. T-1 minute. T-50 seconds. T-40 seconds. T-30 seconds. T-20 seconds. 20 seconds to go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Start questions are those questions in which the legislator wants a minister to give them an oral answer. Not more than 20 start questions can be asked. In fact 20 तो पहुँचते ही नहीं है. तो in fact very recently the honorable speaker of the Lok Sabha Mr. Om Birla ने बोला था कि हमने रिकॉर्ड सेट कर लिया that we have been able to answer 20 questions. And of course जब मैंने स्पीकर की बात कर ली तो you understand it is the Lok Sabha speaker who will decide whether a particular question को start मानना चाहिए या unstarred. And that is how, because the rules of procedure and conduct of business is completely in the hands of the speaker. तो इसको मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. मेक श्योर दैट यू वॉच दोस वीडियोस एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस. तो अब तुम्हें थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो ही गया होगा कि किस तरह से रॉक सॉलिड प्रिपरेशन करनी है. एक टाइम पास प्रिपरेशन होती है जिसमें समय व्यतीत किया जाता है और लोग बोलते हैं मैंने 1 साल प्रिपेयर किया, 2 साल प्रिपेयर किया क्या उस दौरान. दैट इज़ वॉट मैटर्स. इफ़ यू वॉन्ट अ 24 कैरेट प्रिपरेशन, इफ यू रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड what 24 carat preparation is, which will give you a realistic chance of passing, then that is what you have to see. Use my code SIDLIVE, SIDLIVE. This is a special code which will give you an immediate 10% discount, and I'll be very happy to teach you in my plus classes. 28 अप्रैल, अगर तुम आज ये वीडियो देख रहे हो 28 अप्रैल को, तो आज ही ये सब्सक्रिप्शन ले लो बिकॉज तुम्हें 20 बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी वर्थ 10,000 रुपीज़, जो कि यूपीएससी एक्सपर्ट्स अनअकैडमी के खुद के यूपीएससी एक्सपर्ट्स ने बनाया हुआ है. एंड इसमें सारा कोर्स कवरेज है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, सारे करंट अफेयर्स है. अब ये मौका मत जाने दो. एक और इम्पॉर्टेंट बात, 28 अप्रैल से पहले 28 अप्रैल से पहले लोगे तो 1 साल का कोर्स 1 साल का नहीं होगा. अनअकैडमी तुम्हारा तब तक साथ देगी जब तक प्रीलिम्स 2022 नहीं हो जाएगा. और 2 साल का कोर्स 2 साल का नया होके अनअकैडमी तुम्हारे लास्ट डे तक यानी कि प्रीलिम्स 2023 तक तुम्हें सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड कर देगी. सिर्फ तुमको जो याद रखना है वो याद रखना है कोड SIDLIVE एंड इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. लेट अस अंडरस्टैंड दिस. तो फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो भी यूज़ द कोड SIDLIVE. लेट अस गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस रैपिड रिविजन 91 to 100 नाउ. Question number 91. Which of the following best describes directive principles of state policy? Word को ध्यान दो. Best description. A. Positive injunctions. B. Negative injunctions. C. Justiciable injunctions. D. All of the above. कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है कि तुम लोगों में से जिन लोगों ने मुझसे नहीं पढ़ा होगा
वो इन क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करेंगे, बिकॉज 90% ऑफ तुम्हारे कंपटीशन को तो यही नहीं मालूम होगा कि ये इंजंक्शंस क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल ये सब तो दूर की बात है, बट कोशिश कर लो। और जो मेरे प्लस वाले हैं, जिन लोगों ने प्लस में पढ़ा हुआ है, वो तो इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। सो लेट अस गो ऑन दिस पार्ट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Minus 50 seconds. T minus 40 seconds. 40 seconds to go. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. परफेक्ट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एक्चुअली DPSPs जो होते हैं वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन है, दे आर पॉजिटिव इंजंक्शंस, डायरेक्शंस, ओके, रादर कमांड्स, ओके। So these are positive commands from the Constitution of India to the state, to the government, to do certain things for the people. In other words, वो कुछ करने को बोल रहे हैं। On the contrary, negative injunctions, fundamental rights and justiciable, certainly fundamental rights, because Article 37 of the Constitution is very, very clear about this. Article 37 of the Constitution says that the principles enforced in the Part 4 of the Constitution are not enforceable through the courts of law. But it shall be the duty of the government to enforce these principles while making laws. ये positive injunctions है, limitations नहीं है. So let's look at question number 92 coming your way. Magridah kasyasvadanam, which in English means, and I quote, "Do not be greedy for anyone's wealth," is the motto of. अब अगर तुमने इसमें ज़्यादा common sense use करने की कोशिश की और you want to replace common sense with the pure rock solid knowledge of polity, तो तुम गड़बड़ करने वाले हो, बिकॉज इसमें कोई हिंट ही नहीं छोड़ी है मैंने। ए लोकपाल ऑफ इंडिया, बी कैग एज इन कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर तुमने ऐसा कुछ फेसबुक काइंड ऑफ कॉमन सेंस यूज़ करने की कोशिश की कि यार डू नॉट बी ग्रीडी, ज़रूर मनी से रिलेटेड कुछ होगा, तो लोकपाल ऑफ इंडिया, कैग ऑफ इंडिया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड ही है, तो सोचते रहो, आंसर आने वाला है नहीं। Until unless you know the subject. Your time starts now. T minus 1 minute. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. 40 seconds. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. 20 seconds to go. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. परफेक्ट आंसर ऑफ कोर्स लोकपाल ऑफ इंडिया। मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ, ये एक टॉपिक है जिसको ज़्यादातर लोग इग्नोर करके बैठते हैं, और ये वो टॉपिक है जहाँ से एक्चुअली बहुत सारे टॉपिक्स ऑफ पॉलिटिक्स कनेक्ट हो सकते हैं। पढ़ने वाला होना चाहिए, पढ़ाने वाला होना चाहिए। तो लोकपाल ऑफ इंडिया कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू CBI, CVC कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू विनीत नारायण केस, विनीत नारायण केस कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द CBI not functioning its performance. Then CBI सीधा can be connected to the Prime Minister's office, to the Ministry of Home Affairs, UPSC का role, and so on and so forth. So you can just go on and stretch it out. तो मैंने एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया हुआ ऑन यूट्यूब, जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो। मैंने बोला है कि लोकपाल से स्टार्ट करो, और ऑल्सो मैं बार बार फिर बोलता हूँ कि कोई जो भी चीज़ नई होती है, there's something which is revolutionary happening for the first time after so many years of litigation and so many years of legislation and so many efforts, Anna Hazare साहब की रैली and everything, we finally had Justice Pinaki Chandra Ghosh as our Lokpal,
और भाई इतना बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है तुम्हारी लाइफ में, तो तुम्हें वो तो मालूम ही होना चाहिए, और अगर तुम्हें वो नहीं मालूम है तो यूर इन ट्रबल। सो मेक श्योर दैट यू नो एवरीथिंग अबाउट लोकपाल ऑफ इंडिया। और ये टॉपिक लास्ट में आता है ना, तो ज़्यादातर लोग पढ़ते ही नहीं। भाई पार्लियामेंट तक ये पढ़ लेते हैं, बहुत हो गया। तो वो इसलिए उसको पढ़ाई नहीं बोलते, उसको कंफर्ट जोन बोलते हैं, उसको प्रिपरेशन नहीं बोलते, उसको टाइम पास प्रिपरेशन बोलते हैं। और वो मुझे उम्मीद है कि तुम नहीं कर रहे होंगे। वेयर वॉज द ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान मीडिएटेड by the Soviet Union, signed after 1965 India-Pakistan war? Where was the treaty between India and Pakistan mediated by the Soviet Union, signed after 1965 India-Pakistan war? Lahore, Tashkent, Moscow, Siachen. Your time starts now. T minus 1 minute. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. 40 seconds to go. थोड़ा तो दिमाग लगाओगे, मीडिएटेड बाय तो आ जाएगा आंसर। T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. परफेक्ट। अगर तुमने इस तरह की कोई कॉमन सेंस यूज़ करने की कोशिश की थी, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग एन आंसर यू वुड हैव जस्ट कंफ्यूज योरसेल्फ, बिकॉज द ट्रीटी वॉज मीडिएटेड बाय द सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन पढ़ के तो सीधा सीधा मॉस्को भी ध्यान आ जाता है, बट मॉस्को एंड ताशकंद दोनों ही था, तो फिर आंसर क्या देते? तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें सब्जेक्ट आना पड़ेगा। येस, इट कैन गिव एन हिंट टू एलिमिनेट सर्टन चॉइसेस, जैसे लाहौर नहीं हो सकता था, सियाचिन नहीं हो सकता था। सियाचिन में -30 डिग्री सेंटीग्रेड में बैठ के इंडिया पाकिस्तान वाले लोग बैठ के थोड़ा ना मीडिएट वो ट्रीटी करेंगे। लाहौर में थोड़ा जाएंगे हम लोग, इंडिया वाले पाकिस्तान जाएंगे, लाहौर में जाके इंडिया पाकिस्तान वॉर में क्यों करेंगे? एक न्यूट्रल स्टेट है, एंड दैट टू मीडिएटेड बाय द सोवियत यूनियन, तो वो लाहौर क्यों आएंगे? अब बच्चे ताशकंद एंड मॉस्को। ओके, ताशकंद ज़्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है, सो यू कैन मेक अ मिस्टेक ऑन दिस पार्ट। हैविंग सेड सो, 100 बातों की एक बात ये बात है that until you know the subject, very difficult to go and do all this kind of guesswork in the exam, especially while you're sitting in the examination hall. वहाँ पे तो ऐसे प्रेशर होता है। यहाँ 60 सेकेंड्स है, देखा पीछे से 60, 50, 40, 30। ओके, बाय द टाइम तुम क्वेश्चन पढ़ के चॉइसेस पे आते हो, इट्स ऑलरेडी 30 सेकेंड्स लेफ्ट। उसमें बाद में ये सब गेसवर्क नहीं चलेगा, इसलिए तुम्हें इतनी डेप्थ में मालूम होना चाहिए कि हुआ क्या था। सो 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ। ओके, देयर वाज बोथ साइड्स अटैक्स। ओके, वी वेंट इनटू सर्टेन पार्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान आल्सो हैड प्रॉब्लम्स or rather entering into some areas of ours. Then Soviet Union decided to mediate a ceasefire. हमारी तरफ से हमारे ग्रेट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री वेंट, उनकी तरफ से उनके मिस्टर अयूब खान केम, एंड अनफॉर्चुनेटली, पहले फॉर्चुनेटली कि एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन बहुत दुख की बात, अनफॉर्चुनेटली वी फॉर वट एवर रीजन्स, एक हार्ट अटैक हुआ ऐसा बोला जाता है, एंड मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री नेवर केम बैक। सो वी लॉस्ट द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर at Tashkent, soon after the 1965 India-Pakistan War Treaty. So ठीक है, वॉर ख़त्म हुआ, अच्छी बात हुई, लेकिन वी ऑल्सो लॉस्ट आवर ग्रेट बिलवड प्राइम मिनिस्टर मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। तो ऐसे ही याद रखना होता है हिस्ट्री को, पूरे संदर्भ में, पूरे कॉन्टेक्स्ट में, अदरवाइज पता नहीं क्या करोगे तुम। विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड? ए आर्टिकल 41, बी आर्टिकल 44, सी आर्टिकल 46, डी आर्टिकल 50। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स याद करने के नहीं, उसका एग्जांपल ये है। T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Absolutely perfectly understood. Answer is of course Article 44. So Article 41 जो था, it deals with right to work, right to education, right to public assistance in certain cases. Okay, कुछ लेना देना नहीं. Article 46 states has right to enhance the social and economical and education status of scheduled caste, scheduled tribes and other weaker sections of society. तो ये reservation से related है, इसमें भी कोई लेना देना नहीं है. What is Article 51 जो actually previous year पूछा हुआ है, that the state shall right to maintain international peace and security and so on so forth. तो बचा ऐसे भी आर्टिकल 44. और अगर ऐसे भी नहीं है तो भाई जिस तरह से मैंने प्लस क्लास में किया है, मैंने कम से कम 3 घंटा यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़ाया अलग से, ट्राइंग एंड अंडरस्टैंड दिस द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शाहबानो केस ऑल्सो. सो मोहम्मद अहमद खान वॉज द शाहबानो केस ऑफ 1986. राजीव गांधी साहब की द सो कॉल्ड लेजिस्लेशन जो बाद में एज अ बैकफायर हुआ था, द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन, प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन ऑन डिवोर्स एक्ट ऑफ 1986, उसके रिलेशन उससे पहले और उसके बाद में द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटेनेंस, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 125 CRPC, ओके, एंड सो ऑन सो फोर्थ हैज़ टू बी अंडरस्टूड. अगर तुमको ये नहीं आ रहा है, यू आर बाउंड टू गेट इनटू ट्रबल. मेमोराइजेशन तब करने की जरूरत पड़ती है जब सब्जेक्ट नहीं आता, और सब्जेक्ट आ जाता है तो मेमोराइजेशन करना नहीं पड़ता. दोनों इंपॉर्टेंट है. हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द फर्स्ट लोकसभा ऑफ इंडिया? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. के. मुंशी, सी. M.A. अयंगार, डी. G.V. मावलंकर. अगर तुम्हें ये नहीं मालूम है तो बड़े दुख की बात है, बिकॉज दीज आर द स्टॉलवर्ड्स ऑफ आवर सिस्टम एंड हिस्ट्री. तुम्हें मालूम होनी चाहिए. T-50 seconds. T-40 seconds. T-30 seconds. 30 seconds to go. T-20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. परफेक्ट. आंसर इज G.V. मावलंकर. ओके, और अगर तुम्हें G.V. मावलंकर साहब के बारे में नहीं मालूम है तो तुम्हें जो हमारे लोकसभा में मेजॉरिटी ऑफ द कन्वेंशन है वो हमारे फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा की वजह से, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू द कोरम, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू रूल्स ऑफ प्रोसीजर, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, तो मावलंकर साहब के बारे में इतना मालूम होना ज़रूरी है. नाउ इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है दैट तुम फर्स्ट से लेकर लास्ट तक प्रेसिडेंट्स तुम्हें मालूम होने चाहिए, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक प्राइम मिनिस्टर्स मालूम होने चाहिए, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक वाइस प्रेसिडेंट्स मालूम होने चाहिए, फर्स्ट चीफ जस्टिस, प्रेजेंट चीफ जस्टिस ये मालूम होने चाहिए, फर्स्ट स्पीकर प्रेजेंट, फर्स्ट चेयरमैन प्रेजेंट, फर्स्ट CVC चेयरमैन, फर्स्ट UPSC चेयरमैन, फर्स्ट CEC, फर्स्ट एंड द लास्ट ऑफ रेस्ट ऑफ देम. बाकी सारे प्रेसिडेंट, सारे प्राइम मिनिस्टर, सारे वाइस प्रेसिडेंट्स एब्सोल्युटली इन सीक्वेंशियल ऑर्डर तुम्हें मालूम होना चाहिए. अगर ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये बोनस क्वेश्चन होते हैं, लॉस होता है. अगर नहीं आते तो भाई इसके बारे में कोई गेस वर्क तो किया जा सकता नहीं. इसके साथ साथ यू शुड ऑल्सो मेमोराइज द इंटायर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. ओके, ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन थे, हु वाज द टेम्पररी प्रेसिडेंट, हु वाज द प्रेसिडेंट, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, एंड सर्टन कोटेशंस ऑल्सो, जैसे के मुंशी साहब ने बोला था दैट द प्रीएम्बल इज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एटसेट्रा एटसेट्रा. यू मस्ट नो एवरीथिंग. तो इसके लिए एक दिन निकाल लो या आधा दिन निकाल लो and make sure that you memorize the trivia related to your history also. Question number 96. A bill to alter the name of any state can be introduced in the parliament only with the prior recommendation of the A. President of India, B. Interstate Council, C. Governor of the concerned state, D. Union Home Minister. मैं फिर repeat कर रहा हूँ. A bill to alter the name of any state can be introduced in the parliament only with the prior recommendation of, only पे ध्यान देना. T-1 minute. टाइम भी स्टार्ट हो गया, बताओ. T-50 seconds. T-40 seconds. T-30 seconds. 30 seconds.
तो कितना फास्ट तुम्हारे ब्रेन को प्रोसेस में आना चाहिए टू बी एबल टू आंसर दिस पार्ट। T minus 20 जितनी देर में तुम seconds. क्वेश्चन पढ़ के चॉइसेस पढ़ते हो 30 सेकंड तो निकल चुके होते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. एंड ऑफ कोर्स द आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो मेरे स्टूडेंट्स प्लस क्लास के हैं उनको तो मालूम ही होगा, वो आर्टिकल के साथ बोल रहे होंगे, बिकॉज it is article 3 of the constitution which says that you can alter the name of the state, but it will only with the prior recommendation of the president. The president will also put this recommendation to the states. The state can also reply back, but the opinion is not binding on the parliament. Still there is a concept of some kind of give and take on this part. अब इसको कुछ लोग फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ये चैलेंज टू फेडरलिज्म है, कुछ लोग बोलते हैं ये तो अच्छी बात है कि स्टेट से पूछ लो, कुछ लोग बोलते हैं कि इट इज़ अ क्वासी फेडरल स्टेट विद अ यूनिटरी टेरिटरी। तो प्लीज़ रिमेंबर इंडिया के फेडरलिज्म भी अपने आप में एक मेजर क्वेश्चन मार्क होता है, और इसीलिए मैंने गवर्नेंस के क्लास में भी और प्लस क्लासेस में भी आई हैव डेल्ट स्पेसिफिकली विद फेडरलिज्म। ओके, सो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हमारे पास फेयर वेदर फेडरलिज्म है। अब इस पर क्वेश्चन आ सकता है फेयर वेदर फेडरलिज्म, बताओ यार। सो कितना सॉलिड डिस्कशन हुआ है, एंड जो मेरे प्लस स्टूडेंट्स हैं आई एम श्योर दे कैन राइट रीम्स ऑफ पेपर ऑन फेडरलिज्म, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है with regards. So please remember it is also part of the basic structure doctrine, the Constitution of India. Question number 97 coming your way. I hope तुम्हें अब तक रियलाइज होगा कि पॉलिटी पढ़ते कैसे। ओके, किताबें कैसे खोलते और बंद करते ये तो तुम्हें आता था, पॉलिटी पढ़ते कैसे आज तुम्हें शायद समझ में आने लग गया होगा। क्वेश्चन नंबर 97 coming your way. Consider the following statements. 1. The speaker holds his office during the pleasure of the president. 2. Anti-defection law is not applicable on the speaker of the Lok Sabha. 3. The speaker can tender his resignation to the deputy speaker. 4. The speaker cannot vote in the Lok Sabha in any condition. Which of these statements is or are true? 1 only, 1 and 4 only, 2 and 3 only, all of the above. The time starts now. T minus 1 minute. T minus 50 seconds. 50 सेकेंड्स। ये वैसे ये भी मेरे को भी बड़ा अजीब सा लग रहा है, अभी चालू नहीं होता और 20 सेकेंड तो खत्म ही हो जाता है। बताओ ये बहुत जल्दी। The relentless and the slow steps of time. T minus 20 seconds. 20 seconds to go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. परफेक्ट। इसमें गड़बड़ क्या था? अब इसमें स्पीकर होल्ड्स हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। यार माना कि कलयुग आ गया, लेकिन इतना बुरा हाल नहीं हो सकता दैट द एग्जीक्यूटिव के प्लेजर में legislative will be holding his office, certainly not done. दूसरा is the speaker cannot vote the Lok Sabha in any condition. अब ये जब any condition never always word आते हैं ना, थोड़ा ध्यान से करना, because the speaker can vote but only when there is a tie in the Lok Sabha. As a tiebreaker vote which is popularly called as a casting vote, the speaker can vote. तो जो ठीक था वो anti defection law था, because section 5 of anti defection law gives you what is called as exemption to the speaker or to the presiding officer कि उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। स्पीकर कैन सर्टेनली टेंडर हिज रेजिग्नेशन इन राइटिंग टू द डिप्यूटी स्पीकर एंड वाइस वर्सा डिप्यूटी स्पीकर कैन ऑल्सो टेंडर हिज रेजिग्नेशन इन राइटिंग टू द स्पीकर। तो इतना फ्लो आना चाहिए, और बिल्कुल ऐसा कहीं और भी हो, बट इस तरह से जब ब्रेन में सारा के सारे टॉपिक्स बिल्कुल फ्लो की तरह आएगा, यू विल नेवर गो रॉन्ग। सो टेक अ वाइज डिसीजन माई फ्रेंड्स। एग्ज़ाम बिल्कुल करीब आ जाती है, और वैसे भी अगर एग्ज़ाम 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल पीछे हो, दूर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये उस दौरान तुमने क्या किया, दैट इज़ वॉट मैटर्स। सो यूज़ माई कोड SIDLIVE SIDLIVE by Dr. Sidharth Arora, and I will be very very happy to teach you. CBI can take over an investigation being conducted by the state police under the conditions of A. Consent of the state government and the DSPE Act of 1946. B. When ordered by the High Court to do so. C. When ordered by the Supreme Court to do so. Any of the above. And your time starts now. T minus 1 minute. T
minus 50 seconds. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. 20 seconds to go. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. परफेक्ट। ये 2020 में एक हमारे बॉलीवुड में हमारे यंग मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत का एक बड़ा ही दुखद हादसा हुआ था। जब ये क्वेश्चन बहुत बार राइज करता, तो मैंने एक्चुअली यूट्यूब पर ये वीडियो बनाया था और उसी से एक्चुअली हम लोग को एक सीबीआई से रिलेटेड बहुत अच्छा टॉपिक पता चल जाता है। सो सीबीआई कम्स अंडर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946, बट ये अजीब सा एक फेडरलिज्म का क्वेश्चन आ जाता है। फिर से फेडरलिज्म वाई? बिकॉज सीबीआई कम्स अंडर यूनियन लिस्ट, दैट इज लिस्ट नंबर 1 ऑफ द 7th शेड्यूल, वाइल पुलिस कम्स अंडर स्टेट लिस्ट, दैट इज लिस्ट नंबर 2 ऑफ द 7th शेड्यूल। अब अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है एक स्टेट में हुए हादसे को, सीबीआई को यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं कि तुम जाके इन्वेस्टिगेट करो, तो कहीं ना कहीं ये फेडरलिज्म का एक बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन मार्क बन जाता है। सो व्हाट इज द डीएसपी एक्ट 1946 प्रोवाइडिंग? दैट देयर आर टू वेज। वन, if the central government proposes that the CBI should investigate and the state government should give the consent, तो फिर ये फेडरलिज्म का क्वेश्चन नहीं बनता। बट ये तो हुआ सेंटर और स्टेट का प्रॉब्लम। लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं है अगर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट gives an order that for whatever reasons in the interest of justice the CBI should take over an investigation, whether regardless of the matter is with the state police or the investigation has started or not, then you don't need to do all these things under DSP Act of 1946. Then you can actually bypass and the CBI can take over an investigation. So very beautiful question. CBI से related बहुत सारे questions हो सकते हैं which can actually directly indirectly touch upon the concept of federalism. Make sure that you know this. We are coming to the second last question, question number 99 coming your way. Which amongst the following statements with regards to whip is or are true? A, the concept of whip is provided under rules of procedure of the Lok Sabha. B, the ruling party can issue a whip to its member. C, the opposition party cannot issue a whip to its members. Whip is provided under Article 75 of the Constitution. ध्यान से, your time starts now. 1 minute. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. 20 seconds to go. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. See, whip भी एक बड़ा ही interesting concept है and much controversial also, because whip is actually an order given by the political party for its members. अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट भी है, बट ये इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क ऑन डेमोक्रेसी ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पर फ्री रिप्रेजेंटेशन एंड द फ्री स्पीच ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी पे सवाल उठता है। बट इट इज़ नाइदर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर गिवन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी कैन इशू विद। सो इसमें क्योडो ओलोन केस, इसमें जुचिलू केस का कॉन्सेप्ट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। बड़े सारे कुछ सवाल उठते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों डाइल्यूट हो जाता है बिकॉज ऑफ विप and so on and so forth. इसको प्लीज़ ध्यान से पढ़ लेना। It is a very interesting combination of political governance and the reality of the situation here. So let's go to question number 100 and final question. Which landmark judgment of the Supreme Court dealt with the sexual harassment of women at workplace? A, Hossain Khatun case. B, Vishaka case. C, Shah Bano case. D, Shaira Bano case. Last question of the day. एंड इसी साथ तुम रिमाइंड कर सकते हो कि मेक श्योर दैट तुम सुप्रीम कोर्ट की सारी जजमेंट्स पढ़ लो। अगर खुद पढ़ सकते हो तो ठीक है,
नहीं पढ़ सकते, प्लीज़ डोंट हेजिटेट एंड डोंट वेस्ट अ सिंगल मोमेंट इन जॉइनिंग अस इन आवर प्लस क्लासेस. नीचे नाम देखो, डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा. यूज़ माई कोड SIDLIVE एंड जॉइन इट. मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ because it is very very important for you to give yourself a realistic chance of passing this exam. T-minus 30 seconds. T-minus 20 seconds. 10, 9, 8, Last 5 7, seconds. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Absolutely perfect. The answer of course is the Vishaka case. तो भवरी देवी वाला केस था which was in Vishaka case. इसके बाद 1998 में Supreme Court gave what are called guidelines for the state to follow in order to protect the women from sexual harassment at workplace. फिर 15 साल के बाद the Parliament decided to pass what is called as the POSH Act, also is the Prevention of Sexual Harassment at Workplace Act of 2013. And this is the legal backing to the Twitter campaign or the social media campaign which is popularly called as the hashtag #MeToo campaign. So you must know all the judgments and I hope तुम लोगों को realize हो गया. We have finished the 100 questions का rapid revision. These questions have already been discussed and we have done the rapid revision also. I hope to see कि तुम्हारे 100 और 100 आए because मैंने इसको explain भी कर दिया है. Now you know what is rock solid 24 karat preparation. Now you know कि इसकी realization की कितनी important है और कितना आना चाहिए और कितना नहीं आना चाहिए. So make sure that you do not waste this opportunity. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you and Jai Hind.